Hold your hands and let's play to Lord Dhanvantari. Om Namo Bhagavate Mahasudarshanaaya Vasudevaya Dhanvantare Amrit Kalash Hastaya Sarvabhay Vinashaya Sarvarog Nivarnaya Trilokya Pate Trilokya Nidhe Sri Mahavishnu Swarup Sri Dhanvantari Swarup Sri 𝑘𝘼𝑖𝑋𝑼𝑎𝑖𝑗 Narayanaaya Namaha. Thank you. Moving on, I will take this opportunity to share with you all the objectives of our NIMA OBGYN Society. Our objective is to promote the spread of knowledge and to force education in the subjects of integrated obstetrics and gynecology, human reproduction, family welfare, and allied topics with integrated approach of Indian medicine with modern medicine. So now coming to the webinar series, today is the first webinar of this series. And as you all know, the topic is basics of laparoscopy. Laparoscopic surgeries are currently being increasingly used for wider and wider application. It is necessary to have the knowledge of its basics. That's why today's topic has been selected. We are privileged to have Dr. Raman Singh sir, a renowned lab surgeon, as our guest speaker. We are honored to have you, sir. So with curiosity and excitement in our mind, we extend a warm welcome to you, sir. Thank you. I also welcome all the dignitaries present today, Dr. Vinayak Temburnekar sir, President NIMA Central, Dr. U.S. Pandey sir, Secretary NIMA Central, Dr. Ashutosh Kulkarni sir, Treasurer NIMA Central. I would also like to welcome Dr. Kamini Dhiman ma'am, President NIMA OBGYN Central, Dr. Priyanka Nakadi ma'am, Secretary NIMA OBGYN Central, Dr. Vishnu Bhavane sir, Treasurer NIMA OBGYN Central. We also welcome all the delegates who have joined this webinar. We welcome you to this wonderful session. I would like to tell everyone, we will take the queries in the last of the session. You all can speak about your queries during the session, after the session, by unmuting yourself and by raising your hand. We will try to address all the queries. So before we start, let's take a moment to introduce our guest speaker, Dr. Raman Singh sir. Now I invite Dr. Alpa to give a brief introduction of sir. Over to you, Dr. Alpa. Hello everyone, I am Dr. Alpa and I feel privileged to introduce to you all to the pioneer of laparoscopy in Ayurveda, none other than Dr. Raman Singh sir. Sir is a great Ayurvedic physician and a very efficient general and a laparoscopic surgeon. About sir, sir has done his graduation in Ayurveda from Calcutta and his post-graduation from the very prestigious BHU. His PhD is also from BHU under the very learned and reputed surgeons, Dr. 𝑘𝘼𝙋𝘼𝙍, Dr. S.C. Varsne, and Dr. V.K. Shukla. His topic of research was Sushruta's Nadi Yantra and endoscopic technology in surgical practice, which is nothing but what we call today as laparoscopy. At this time, when most of us are still thinking what to practice and how to practice, sir has already been practicing GI surgeries very efficiently since 1982 and laparoscopic surgeries since 1983. Sir actually practices with the aim to supplement Ayurveda and allopathy with each other to give the best possible treatment and relieve the sufferings of his patients. And as a person, sir is such a kind and humble person who is always there to help us and guide us. So now, with all due respect, I invite Dr. Raman Singh sir to start his session. Over to you, sir, please. Okay, thank you, Alpa, for giving brief about me. And a special thanks to Dr. Priyanka. I am very much grateful to Dr. Priyanka. Thank you, sir. Thank you for joining us, sir. This is our privilege. We are very lucky to have you today. You are such a great laparoscopic surgeon, and we are now lucky to hear something from you about laparoscopy, as it is a boon for a gynecology and other general practitioners also. So today for the budding gynecologists, it is a very good opportunity to learn from you. Thank you so much. Dr. Priyanka, my special thanks to you because you are doing my job. You can do my job. I tell you,
About 15 to 20 years back, I went to Pune and contacted the persons where they have a NIMA PG branch. So I was always wanted to make a PG branch in Varanasi. So can my Ayurvedic approach, both especially Salya and Prasuti, they can be benefited to sharing the mutual experience. But I was failed to do this, what you are doing this time. So I am very, very happy that you are moving and are proving my this dream to make a post-graduation so that we can exchange our views and the newcomers can learn from each other. So that's why it was my very special thank. And now I also thanks to the organizer, especially the NIMA Central Committee, Dr. 𝙇𝘼𝙋𝘼𝙍𝙎 or Secretary Dr. 𝘽𝘼𝙎𝘾𝙎, Treasurer Dr. Kulkarni, and this NIMA OBGY Secretary Society, Dr. Kamini Dhiman, Dr. Priyanka, or Dr. Vishnu Bhavani. So I am thankful to all of you to giving the opportunity to have this idea for sharing with you. Now I want to start my talk with shlokas, where you are when I got the admission in BHO in post-graduation. Dr. P.J. Deshpande, he was our head of the department, and he told us that whenever you come into operation theatre, you have to pray Bhagwan Dhanvantri. Surajeshto Daksha Sri Dasapati Vaidya Dvasti Suna Sira Sreshta Saparikar Dhanvantri Buddha Ime Satkaranya Briju Karanena Sumrita Sara Vagdan Dabdu Kar Kushal Shalle Sapalatam. Means we pray Bhagwan Dhanvantri and his parikar to help us, because I am going to treat this patient, and he gives us the knowledge so that we can get successful in the treatment. So we were instructed that before going to operation theatre, entering into operation theatre, you have to pray God. And in lateral life, I heard that there was a survey all over the world in the operation theatre, that in the operation theatre where they were praying or doing some worship or praying to God, the success rate was more in comparison to that operation theatre where doing nothing and straightforward going for the surgery. So I have also got to believe that whenever you think and you remember the God, because He will give you the way. In many times in surgery, we feel that whenever there is a difficult situation where we are in dark, what to do or what not to do, suddenly an idea comes into the mind, and where it comes from, you don't know. Definitely, it is from the God or goddesses to whom we have prayed always in our daily life. So it is my experience that whenever you get in the problem, land up in the problem, especially in the surgery, there are some waves of the ideas come into mind, and then you suddenly come up with the problems and you get the solution and get the success in the surgery. So this is the first, we should also remember to pray whatever you believe in the God, you should pray for the God. And this is the basics. And more basic things is the surgeon. If we talk about the basics of the laparoscopic surgery, the basic thing is surgeon and the patient. The surgeon should have a quality of patience, especially in laparoscopic surgery. The patience is much required, and dedication, and having faith in the gurus, and having a nature of regard of your elders. In this way, you can learn the surgery from your gurus and your stalwarts in the experienced person. And they have also got a nature of dedication, practice, and hard work, and this will give you the success in the life. As our gurus and saints say, Satata Dhyana Vada Tat Tantra, Saddanya Vara Paratantra Urokanam Tat Vidyachara Sevaja Buddhi Meda Karogana. Wherever you want success and to be master in the subject, there should be Satata Dhyanam, continuous education. Vada, discuss with others, discuss with other experienced person.
Partantravalokanam. You see what others are doing, the same surgery in which way they are doing, and regard your elders, regard our guru, then you will get expertise in that line. So Satata Dhyana Vada Partantravalokanam Tad Vidyachara Sevacha Veda Guru Medha Karogana. So this is the way, and the surgeons should have this type of nature. This is the basic. This is a basic to learn the laparoscopic surgery. And second is the patient. First, in initial, you have to choose the simple surgery and but a healthy patient. Like dyspeptic, we call always this dyspeptic gallbladder as a safe gallbladder. I remember when I joined in the PhD, the whole team before surgery, they were going to learn in the radiology department about the ultrasonographic finding. By that finding, we came to the conclusion with that which gallbladder is simple, which gallbladder should be posted tomorrow in operation theater, and which should be avoided for other time. So in this way, you have to select the patient which is where the gallbladder is simple and where the surgery is simple in initial life, and then gradually you enter in the difficult cases. So this is the main basic of laparoscopic surgery. The quality of the surgeon and the quality of the patient both should be decided, and both should be up to optimum mark where you get the success. When you get the success, gradually you will get the confidence. If you do not get the success, then your confidence will lose. And in the meantime, many surgeons, many my friends, even MBBS and MS, my friends, and my students which were trying to learn the surgery, they left the doing laparoscopic surgery in midway because mentally they were not prepared, and they were not choosy in the patient. Which patient should I post for the surgery? And after getting the difficulty, after landing into the problem, they lost their confidence and they leave the laparoscopic surgery. So the patient selection is very important, and the mental status of a surgeon is very important, because in this field, unless you do the practice, you do the regular practice, you cannot be a good surgeon. So this is my first point to be in basics of the laparoscopic surgery about the quality of the patient and quality of the surgeon. Now I will come to my talk by showing the slides. How I can go to my main screen of share screen. Is it clear? Now can you see the slides? Yes, sir, we can see. So the basics of laparoscopic surgery, which we have decided to talk on this. Now we come to the pioneer who started this laparoscopy surgery in Ayurveda field. He is Dr. P.J. Deshpande from Aurora, Maharashtra. He did his AMS, that is Ayurveda chair with modern surgery. And after doing Ayurveda chair from Banaras Hindu University, he went Vienna and he did 𝙍𝘼𝙎𝘾𝙎, that is 𝙍𝘼𝙎𝘾. In Germany, the surgeons have told a 𝙍𝘼𝙎𝘾 in abdominal and thoracic surgery. And he was the first who did the kidney transplant with Dr. Udupa in Banaras Hindu University. And he was the father of modern 𝙍𝘼𝙎𝘾 and Prasuti. Before his era, the only 𝙍𝘼𝙎𝑐𝑖𝑔𝑖𝑠𝑎 was prevalent in India, and the clinical subject like 𝙍𝘼𝙎𝑾 and Prasuti was on back footed. And Dr. Deshpande, after coming from Germany, he was head of the department of 𝙍𝑼 Tantra, and he started training a BAMS, Dr. Premwati Tiwari, and made him the head of the department and good gynae and obstetric surgeon in Ayurveda field. And by his attempt,
I started laparoscopy surgery unit in 1983 in Department of 𝙎𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛𝑡𝑟𝑎. So he is the pioneer and he is the father of starting laparoscopy surgery in 𝙎𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛𝑡𝑟𝑎. Now the laparoscopy, you see the laparoscopy, it is a surgical procedure in which an optical instrument is inserted through the abdominal wall to view the organs and to facilitate the surgical procedure. This is the definition of modern laparoscopic surgery. Where in Ayurveda, in Sushruta, in the yantra, he described Nadi yantra are the tubular instruments of the various designs, several openings having various lengths, various thickness, and it is used for diagnosis to facilitate the surgery and to review the foreign material. This was the sloka Nadi yantrani anek prakarani anek mukhani ubhay mukhani yatha yudrkhani ek mukhani ubhay mukhani and rog darsanatham kriya sokarartham achu sanartham. And Dr. Deshpande asked me that this sloka, when you read, and there is total description of laparoscope. Whatever laparoscope you are getting in these days, the principles of laparoscope are not other than the Sushruta what he have described thousands of years ago. So this laparoscopic surgery is nothing but the modification of Nadi yantra what Sushruta has described thousands years before. Now, as per history of modern laparoscope, it is developed by innovation of various ideas given by the Sushruta. Many modern surgeons, modern scientists, the British physicists like Hawkins, who developed the lens system, industries like Karl Starr from Germany, who started making the various laparoscopy instruments, various gynecologists, surgeons, different countries contributed their ideas one by one, and presently we are getting a laparoscopic surgery which are spread all over the world. A series of thoughts and innovation, scientists, industry, and practitioners in this way developed the present laparoscope. And Sushruta already told, after many views or many industries and many persons involving and doing this research, then we come to the conclusion and a particular definition, which definition already was described by the Sushruta in many back days. Now, present modern laparoscope are the continuation of ancient Sushruta Nadi yantra. This way we can say, because Dr. 𝙍𝑖𝑋𝑼𝑔𝑖𝑔𝑖𝑔 in 1806, he developed a device for exploring the intracavitary organ through external opening. But he never used in human being. He only used in the dog. But moreover, the Vienna Medical Society disapproved the curiosity of 𝙍𝑖𝑔𝑖𝑔, and after that, this is Dr. 𝙍𝑖𝑔𝑖𝑔, he developed the instrument which is shown in the picture. This instrument he was developed simply. It is is it different from the Sushruta what Sushruta has described. This 𝙍𝑖𝑔𝑖𝑔 is called as the father of modern laparoscopic surgery. And we are telling our surgeon, Dr. Sushruta was great, who given the design of Nadi yantra, which Nadi yantra similar to present various laparoscope and endoscope. After 𝙍𝑖𝑔𝑖𝑔, the first human endoscope was done by William Beaumont. He was from Michigan in 1922. He developed an endoscope and he used it in human being. The use of electrical light was a major step in the improvement of endoscopy. David in 1998 developed cystoscope. Now see, gradually the scientists are developing the various types of instruments, and in 1910 the first thoracoscopy was done, and laparoscopy was done in 1902 by Christian Jacobius. The very important instrument which is known as Veress needle, it is developed in Hungary in 1938 by Veress,
And it was the purpose of this instrument was to create pneumothorax, because at that time they were thinking that if a patient of tuberculosis and having a lungs tuberculosis, if we introduce air inside the chest, the bacteria will die and the patient will be cured. So this virus needle was developed to create pneumothorax in cases of tuberculosis. And in this day, which it is very essential instrument, because without this instrument, we cannot perform laparoscopic surgery. Because laparoscopic surgery, the step is to create a pneumoperitoneum. And this needle is helping to create the pneumoperitoneum. So this instrument is so important. After that, Roy Palmer in 1944, he placed his patient in tunnel position after gaseous distension with the help of virus and did the gynecology laparoscopy. Now, the revolution in endovision, this Carl Stos, a optical engineer, and Harold Hopkins, the industrialist, they both combined their knowledge and developed the today's various type of laparoscope. The contribution of optical engineering and increase of vision coupled to revolutionize the field of medical optical. Now, the GI endoscopes were developed from the Japanese people. They developed tiny camera attached to a flexible tube with a light to take the photographs of the stomach, ulcer, cancers, especially in the early cases, because the Japan is very famous for having the gastric cancers. Now, the first laparoscopic cholecystectomy was done in 1987 by Philippe Morel. He performed the first video laparoscopic cholecystectomy in Lyon, France, which is considered as the gold standard technique for gallbladder even today. The first laparoscopic cholecystectomy was done in India in 1990 in 𝙍𝘼𝙎𝘾 Hospital by 𝙍𝘼𝙎𝘾𝙎. And the basics of laparoscopic surgery, if we go through our Ayurvedic literature, if you want to get a siddhi, you want to be a good surgeon, the regular practice is very essential. That's why in Yogya chapter, it is described by Acharya, Prayogasya Vaidyasya Siddhir Bhavati Nityasha. Regular you have to do practice. In laparoscopic surgery, you are also advised to do regular practice. Tasmat Parisram Kuryat Shastranam Dhananase. Among them, it is very essential that before applying the instrument directly over the patient, it is advisable to go through the details of the instrument, how you can hold the instrument, how you can properly utilize the instrument, then you should use on the human being. So these are advised by Acharya Susupta Yogya chapter, that first of all you go through the instrument and you take the instrument in your hand, you see how it is working, how it can work properly. Ma'am, I guess his current is gone. We can wait for some time. I'll just call him and see. Lost the connections with him? Yeah, I guess because the light is also not there. I'll just connect to him and I'll. Yeah. Just 1 minute. One request is there. When sir will join again, please ask sir to start the presentation mode so that the screen will be visible fully. Hello, he is starting just 1 or 2 minutes.
Ji ma'am, I have contacted him. It's the same thing. They've lost the electric connection. They are just getting back. Yeah. Sir, there's a request from the audience side. If you could start again with the in the presentation mode. Means start मतलब presentation mode sir on करके फिर हम वो slides दिखाएंगे तो वो बड़ी और clear दिखाई देंगी सबको. Simply you can press F5. Should I start again? No, sir. Continue from the same thing, but presentation mode पे कर लीजिएगा. So the slides will be very clear at it. Okay. Yes. Can you get now? Sir, please press F5 और presentation mode पे कीजिए. Sir, in the left corner of the screen, there is one sign of screen expansion or the presentation mode. Please, you can click on that. Can you get now? Sir, it is not full view of the slide. In the left corner, there is one sign, sir. Extreme left corner of the screen. Downside. Is it clear? Is it okay? Sir, it is clear, but it is not a full screen view. Full mode. Full screen mode, sir. Otherwise, you can do one thing, sir. On header side, there is a slideshow name is there. F5 button is there, sir. F5. Please press F5. Fifth sign is slideshow. You can do it. Slideshow will be better. Is it clear now? Not yet, sir. It is Slide same, clear sir. है सर. Full screen mode करना है. वो जो 66% दिख रहे हैं सर राइट साइड में आपके 66% उसके पहले का बटन प्रेस करना है. नीचे राइट साइड में नीचे. Yes sir, yes, वही बटन. Is it clear Yes now? sir. Yes sir. Thank you. Should I proceed? Yeah. Sorry for interruption because this was electricity failure over here. We were here, na? Okay. Okay, should I start now? Hello? Yes, sir. Please. Are you hear me? Yeah, we can hear you. So, according to our Acharya Susruta, you should go through the yoga. You should go for the very regular practice. You see, Dr. Vasne is here, and he is doing yoga for laparoscopy. Now, this is cucumber, where this is endotrainer, and this is your screen, where he was practicing hand-eye coordination. In laparoscopic surgery, hand-eye coordination is foremost essential part. Because if you are not practicing over hand-eye coordination, you cannot move forward, you cannot do any laparoscopic surgery. He was from Amaravati in Maharashtra. When he came to the Banaras Hindu University, Dr. Vasane, in 1910, he promoted again laparoscopic surgery in Salyatantra department. And I showed him the picture, he himself was practicing as the Susruta described in the Yoga chapter to practice over the
different types of these objects. Now, in armamentary of laparoscopic surgery, there are various hand instruments, the optics like camera, endoscopes, light source, monitor, insufflator, suction machine, energy source, operation room table, and operation lights. Now, if you go to the instrument, I told you the first instrument which is required in the laparoscopic surgery is varus needle. Can you see this varus needle? Varus needle is one, this is sheath, this is tubular structure, and this is stylet, and this is rounded. Blunt tip, when you push inside, the blunt tip come outside. And when you press it to the object and the body of the patient, the blunt tip come sudden in the intraperitoneal cavity after entering into the abdominal cavity. So this is very safe instrument to create pneumoperitoneum. Here is a lever lock. After putting this needle inside the abdomen, there is an idea to hold this instrument like this. If hold like this, it is guarded and go very gradually inside the abdomen, and you will get the two click sound, one of the anterior rectus sheath and second of the peritoneal and posterior rectus sheath. After getting two click, this needle will enter into the abdomen. Before introducing this instrument, we have to make a nick over the umbilical region, either supraumbilical or infraumbilical. Nowadays, wherever you think safe to go inside the abdomen, suppose there is a person, a gynae lady who has been operated in lower abdominal for any cause, and it is known that after doing surgery, intraperitoneal, there are a lot of adhesions. So to prevent the bowel injury, you should not go around the umbilicus. You should go either from this palmar point, this is left subcostal, or in wherever you think that which area is safe and where no organ can be damaged by this varus needle. At that place, you can enter your needle inside the abdomen. After giving a nick over there, we insert this needle inside, and after feeling that we are in the abdomen, and after this putting a drop of water over the tip of this needle, it suck into the abdominal cavity due to the negative pressure. This indicates that you are inside the abdominal cavity. After putting this needle this way, this is the fashion. This way you should hold the needle. You hold the needle and lift the abdominal wall upward so that to prevent any damage of the bowel. So after putting needle inside, getting two click sound, and after putting a few drops of water, if this water goes in, it means you are in the abdominal cavity. When is sure that needle is in the intraperitoneal cavity, then this needle, this hub is connected with a tube which is connected to the insufflator. Here in insufflator, you see this is the 10. This March 10. It indicates that you have fixed the pressure. You have fixed the pressure of abdomen that it should not go beyond 10. And this is 4. It indicates present pressure of the abdominal cavity, and this indicates the rate, and this indicates your how much carbon dioxide is inserted in the abdominal cavity. Usually, there are 3 things which is introduced into the abdominal cavity to create pneumoperitoneum. The most common is the carbon dioxide. Second is the nitrous oxide. Rarely I never see nitrous oxide is used in abdominal cavity. And third is the air. Sometimes the cylinder is empty, and we have no another cylinder. At that time, air is inserted into the abdominal cavity through this pipe, and we finish our laparoscopic surgery. Now, after creating pneumoperitoneum, usually after 1.5 to 2 liters, the abdomen distends,
and getting proper distension of the abdominal wall. Because when the abdominal wall is distended, the intestine pushed down, and we gave a safe space where you can insert your instrument blindly. So after creating pneumoperitoneum, the other instrument, this is your insufflator. Here this pressure is fixed up to 14, and this is the flow rate, and this is the present pressure in the abdominal cavity. And here it will indicate how much oxygen you have, carbon dioxide is gone into the abdominal cavity. The next important instrument, which is blindly we insert after creating pneumoperitoneum, is the port. These are the ports, the 5 mm port and the 10 mm port. This is trocar, and this is cannula. This is 5 mm cannula, and this is 10 mm cannula. And at the top of this 10 mm cannula, we usually use a reducer. Some other reducer is also, this is also a reducer, where in the 10 mm cannula you insert this reducer, and this is 5 mm hole. So you can use this to reduce the opening of this cannula. You can make it from 10 mm to 5 mm, especially this cannula. So two type of reducer is there. This reducer is used at the top of the cannula, and this reducer is introduced into the 10 mm of trocar to insert 5 mm instruments. The first port is known as the camera port after pulling abdominal wall upwards, and this trocar is inserted into the abdomen. The idea to hold this trocar is the thinner evidence go on the top, and this is hold like this, and by this movement, supination and pronation of the hand, we introduce this instrument into the abdominal cavity. Whenever you get a low resistance, a gap way after entering into the abdomen, you feel a gap way. The loss of force, it means you are into the abdominal cavity. Then suddenly you put out this trocar and connect this lure rock, this opening with the tube of the carbon dioxide, and which is connected to the insufflator and the gas. After creating this first port, which is nose and camera port, the second working port is at the epigastric region. After introducing this first port, second port, especially in the laparoscopic surgery, we introduce again this 10 mm port is inserted in the epigastric region, and the third one over the mid-clavicular line, and fourth one at the anterior axillary line. This is the four port. First the camera port, second is the epigastric port, third is the mid-clavicular port, and fourth is the anterior axillary line port. So these three ports are their working port. This is the camera port, where into the camera, and here are three instruments which help to dissect the gallbladder, after dissection we bring out this gallbladder from this source. Now the important instrument which is very essential is the telescope. This telescope is about 32 to 33 centimeter long. This is the eyepiece, where either earlier when the camera was not developed, in my earlier life, we are seeing with the eye in the abdominal cavity, and we perform the procedure. Mainly the diagnostic procedures and laparoscopic ligation were doing at that time. At that time, this is eyepiece and this is objective piece. Here is the lens, and the object passes from this to come into the eyepiece, and from eyepiece it is transferred with the head of the camera. This is the camera CCU. This is the camera head. We attach this camera head over the eyepiece of the telescope, and the light source is attached over here.
So in telescope usually 10 mm. Sometimes this telescope is 10 mm and oblique. Some telescope are 0 degree, where the field of vision is bigger. But in laparoscopic surgery, 30-degree angle is essential and required. In hysterectomy also, this 30-degree, usually they use the 30-degree telescope. So the telescope is 30-degree, 5-degree. With the 5 mm telescope give this low vision, where the 10 mm telescope give a bigger vision. So in laparoscopic surgery, we usually use this 10 mm telescope. Somebody use 5 mm telescope also. It depends upon the practice. So after attaching this camera, the light source over the telescope, then this is after attaching the light source, and usually in these days, LED light source is very much popular, and it gives a very natural light. Earlier there was halogen and xenon, they were used. They were very costly, and this LED light source is also costly, but gradually the cost is going down, and this light source is very good light source and very popular in India nowadays. This after attaching this light source, we see the picture transmitting from the telescope to the monitor, and after attaching this telescope, we usually balance it, which is known as white balance, because after putting a white piece over the objective piece of the telescope, this white balance is essential, because the vision becomes very clear, very natural after doing white balance. So after attaching the light source, camera head to the telescope, it is essential to do white balancing to get a natural picture. After getting a natural picture, we introduce this telescope attached with camera head and the light source. It is introduced into the first port, that is the camera port over here. And after seeing inside, we just create the second port, epigastric port here for the hand instrument, and third port over here, and fourth port over here. Now this is a camera port, this is epigastric port, this is the mid-clavicular port, the third port, and the fourth port usually at the level of the anterior axillary line. After putting all these 4 ports, we insert various type of instruments inside the abdomen. Now the first instrument which we use, this grasper is used at this side to hold the fundus of the gallbladder. After pulling the fundus of the gallbladder in cataloid area, we introduce the second grasper over here. This is second grasper. This we hold the fundus of the gallbladder with this. After pushing fundus upwards and pushing the Hartmann pass laterally, then we introduce the dissector, or you can say the Maryland. This Maryland helps to dissect the various structures, and it is very essential. Without that, you cannot perform laparoscopic surgery. After creating and calendarizing cystic duct and cystic artery, we apply clips. This is clip applicator. This is the clips. Usually this is 300 clips, medium size, and this is large size, 500 clips. We just put in the cartridge like this, and the clip is attached over here. Then we introduce this clip and ligate the cystic duct and cystic artery. And this we use scissor to cut after clipping the cystic duct and cystic artery. After clipping
And after cutting the cystic duct, then we use the hook cautery. This is hook cautery. From this side, the cable is attached with the cautery machine. And this is the working aid, and this is, it is curved, it is hook. The corner of the hook is used for the coagulation of the structure, and the tip is used for the cutting. This instrument is also used, it is called as for loop, hook and hook. This is very essential that before cutting or damaging or cooking any structure, you should see, you should hook the instrument, then hook the structure and look the structure all around, that whether you are cutting or damaging that part which is essential for the body or not. After being secure that this structure is nothing but what I want, that is cystic duct and cystic artery, nothing else in the way, then you should either cut it or coagulate it. The important thing which should be remembered, that this is the cautery plate, and this cautery plate should cover the whole area of the body. The bigger area of the part should be attached with the cautery, so that to prevent the damage by the cautery machine, it is essential to cover the larger area of the patient body. Now, after clipping, cutting, or coagulating, somebody either cut cystic artery with scissor or they coagulate the cystic artery with the cautery machine. This is suction machine. If you get something inside the abdomen which needed to suck out, this suction and irrigation machine is help to either suck out or to get irrigation to flush the structure over there. So after getting all these instruments, we perform the laparoscopic surgery. Here I will show the two laparoscopic surgery. One was done by my student. This first laparoscopic surgery is doing my student. This is operation theater. This is LED source. You see the cable are attached from outside. This is monitor. These wires are from upward, so that if you are take wire from here, the legs are entangled with the wire, and there is chances of accident in the operation theater. So we put a hanger over there, and we take all the high cord or electric connections from upward, so that they are not entangled with the moving staff of the operation theater. Now this is a monitor, this is camera, this is CCU, this is light source. They are all preparing, they are taking all the instruments from the cabinet. Before going to surgery, you should prepare all your instruments and check it whether it is in working properly or not. So after getting all connections ready and getting all the instruments ready over the operation table, this is telescope attached with the head, as I said you. And now this is light source. We attach over the telescope. When this white balance is done, and now the surgeon is asking for the Weyer's needle, which is the first step of any surgery, any abdominal surgery. Now, before introducing Weyer's needle, he is checking the needle whether it is working properly or not. He is making a nick just below the umbilicus, because above the umbilicus there is a scar. Now he introduced the needle inside, attach the needle with
pipe of the insufflator. And the gas is going inside the abdominal cavity. Here the abdomen is distended. About 2 liter gas is passed into the abdominal cavity. After creating pneumoperitoneum, this first port is created by pushing 10 mm cannula inside the abdomen, now holding the abdominal wall and pushing the trocar toward the pelvis, where there is no structure is there, presuming that there is no structure which can be damaged. The first this diagnostic procedure is performed. Now this is pneumoperitoneum is created, camera is in. After putting the camera port, now first working port is introduced in the epigastric region. As you see, this is the falciparum ligament. And third instrument, working instrument, which is introduced in the mid-axillary line. Usually mid-axillary line, we insert the second trocar, working trocar. After putting it there, now fourth trocar port is introduced, and in this fourth port, this grasper, usually this is traumatic grasper, so that it should not slip. When you hold properly, the tight is upward, it should not slip over from there, otherwise it will hinder our procedure. And the second grasper is introduced in the mid-clavicular line to hold the heart-span pouch. This is 𝙼𝑉𝑠 sulcus. This is landmark from where you should not go down to prevent injury of common bile duct. So the 𝙼𝑉𝑠 fissure is very important. Whenever you start your surgery, just you this is 𝙼𝑉𝑠 fissure. This is 𝙼𝑉𝑠 fissure. This is 𝙼𝑉𝑠 fissure. You should not go down. So he is starting his dissection just above the 𝙼𝑉𝑠 fissure. Now you see. After dissecting posteriorly, this is the same area. After descending posteriorly, anteriorly, the cystic duct and cystic artery is dissected. The peritoneal attachment of the lateral wall of the gallbladder is detached, and the gallbladder area is made free. Now the UR of the 𝙼𝑉𝑠 line always remain on the above the 𝙼𝑉𝑠 line. This is the CBD. This is the CBD. After externalizing cystic duct and cystic artery, he is preparing the clip applicator. After holding the clip on the clip applicator, we introduce the clip applicator into the abdominal cavity. Apply the clip applicator. In this case, both the cystic duct and cystic artery are clipped with one clip. Now, after putting 3 clips, he divided in between the proximal 2 clips and the distal 3rd clip with the curved scissor. Usually curved scissor is very helpful in this case. So he divided over there the cystic duct and cystic artery both in one clip
is folded and divided. This is the pottery hook. This pottery hook introduced in the first working port, and the attachment of the gallbladder is separated gradually. We use the back of the hook cartridge, as you told. This helps to coagulate and cut the tissue. Gradually, the gallbladder is separated from the gallbladder fossa by dividing the attachment that is usually the peritoneal fold. Because this was a simple case, there are no much adhesions over there. After removing the gallbladder, we suck these fluids with the help of suction machine, and usually we use rice tube for drainage purposes to clear out all the leakage, that is serous material or the leakage of some bile, and this gallbladder is pulled out from the epigastric port. Now you can see the second surgery is done by me, and you will see there is no much difference in between two. So this we should try always that our students should learn properly and perform the laparoscopic surgery safely and carefully. So here all four ports are there. This is camera port. This is gallbladder is hundreds of the gallbladder is pulled upwards. Now this is the working port. This working port, which is dissector, is attached with the pottery. This is the third port, where you introduce the grasper to hold the infundibulum or Hd's pouch of the gallbladder, to pull it laterally so that we dissect away. The gallbladder was distended with hydrops of hydrops. So altered bile were there. So I put this needle just by side of this port, and after now this, you see the white bile is coming out. After emptying the gallbladder, the grasping of the gallbladder becomes easier. And now we start the dissecting cystic duct and cystic artery. It is better to remove the attachment posterior to the gallbladder, and this infundibulum become loose, and we go up beyond this common bile duct, which is just below that. It is pulling the gallbladder out far away from the common bile duct to prevent injury to the common bile duct. Because the dreaded complication in laparoscopic surgery is the injury of the CBD. And there is surgical illusion that sometimes surgeon feels that I am cutting the cystic duct, but actually this is not cystic duct, it may be CBD. And by accidentally cut the CBD, injure the CBD, after that the life of surgeon and patient become hell. Now this is gland. This gland is gland of Lund. This was hampering the field of surgery. So I just cauterized and removed this. And then after making the window, this is posterior window. We should make a big window and be sure that there should not be any important receptor. This is callus triangle. This triangle is the callus triangle. After cleaning the callus triangle and clearing the cystic duct artery, we put the clip over there. This is the proximal clip. This is CBD, just near the CBD.
and second cleft just near the first cleft, and the third cleft towards the gallbladder. And then we cut it. After cutting, with the help of hook cautery, we dissect the gallbladder from the gallbladder portion. This was an artery. Sometimes there is an artery just behind the cystic duct. So be careful and cauterize that artery also before cutting it. Otherwise, there will be bleeding over there and will hamper the vision. Pulling of the structure help to cauterize nicely. The traction is required to get proper cauterization. So from left hand it is pulled up and then it is cauterized with the help of hook cautery. Now this gallbladder is removed. यार मैं वो चल रहा हुआ है हमारा कहाँ गया कैंसर The whole solution is 𝙍𝘼𝙈𝙾𝙎. This Nadi Yantra is used. So you see the Nadi Yantra which Sushrata was telling that after performing this laparoscopic surgery, we also, our students should also do diagnostic, this sigmoidoscopy and gastroscopy. This is a case of inflammatory bowel disease. There is inflammation in the sigmoid. Patchy structures which indicate inflammation. As Sushrata says, 𝙍𝘼𝙈𝙈𝙀𝑒 according to our intelligence here, whatever I have said in this is piles. By modification, you can get a good picture by the endoscope of the piles. Now, this is the instrument which is in the cystoscopy. This is cystoscope which is introduced into the urethra. This was a patient of cycle calculus. After going inside, this is urethra, going slowly. This is the bladder. There are multiple stones. So I had only laparoscopic instrument and did not have much urological instrument. There are no lithotripter. And the big stones that I thought how to remove it. And gradually one idea came to my mind, and a suprapubic region introduced 10 mm trocar. After introducing trocar, through that trocar, I introduced the gallbladder extractor, and gradually I picked the stones one by one with the help of grasper. And we also did this urological surgery. Usually I was doing this diagnostic procedure only. But as Sushrata says, 𝙍𝘼𝙈𝙀𝘼𝙈. So according to our own buddhi, the idea came to my mind that why not I should introduce 10 mm trocar and get it out.
So I recommend that laparoscopy, endoscopy, and cystoscopy must be included in the syllabus of MS Ayurvedic Shalya Samanya Nari Yantra. PG course in Shalya Samanya Nari Yantra must be started including diagnostic procedures of GI endoscopy, cystoscopy, and laparoscopy. These procedures are simple and can be trained on the basis of Sushruta Yoga. Thank you very much. Thank you, sir, for such a wonderful session. Sir, you have touched almost all the corners. We talked about the qualities of surgeon, patient selection, instruments, light source, camera, and then showed the surgery video so thoroughly. I'm sure this will be encouraging for all of us. Thank you, sir. Now the house is open for queries. You all can ask the queries by raising your hands, and some have posted their queries also. So we will take them one by one. Okay, so shall I ask? Yes, yes, you can. Okay. So one query. So one query is why we use only CO2 for creating pneumoperitoneum, or if not available, is there any alternative also? Very important question. CO2 is highly absorbed in our system and it has no side effect and it prevents combustion when we use cautery, electrocautery. When you use the energy sources, if there is oxygen, there may be blast over there or it can flare more. You can give a flame over there and it hurt to the patient. But when you use carbon dioxide, this condition will not be there. The combustion is not there, and it very highly absorbed in the blood and go through the lungs, come out after expiration of the patient. So this carbon dioxide is very safe. Sometimes what happens after during surgery and carbon dioxide is finished from the cylinder becomes empty. So that time there is a very bad situation, and for 5 to 10 minutes surgery only remain there. So at that time we use the oxygen. My anesthetist sometimes use ambu bag to introduce this air, room air into abdominal cavity. Presently, there are insufflators over there. They have two options. Either you can use carbon dioxide or you can use room air also. So, carbon dioxide. Yes, sir. So I want to ask, can room air cause embolism? One thing I am telling you, this carbon dioxide should be taken from an authentic source. Otherwise, there are commercial carbon dioxide which is used in making cookies, bakery, and that is carbon dioxide, not medical carbon dioxide, and that is impure carbon dioxide. This can help, they can harm the patient also, and they can harm the surgeons also. We are there in operation theater, and this carbon dioxide come into the atmosphere. The surgeon inhale this carbon dioxide, the impure carbon dioxide, and it will produce the harm. So be careful. Always purchase from authentic source the medical carbon dioxide or carbon dioxide only. Right. What is your question? Sir, I want to ask. You said we can use room air also. So won't it create air embolism? What? The air embolism will be the problem by using room air. Air embolism in doing laparoscopic surgery, I don't think air embolism is much common unless you introduced oxygen direct in the artery. Suppose you are putting your varus needle and this varus needle is going in some artery, and if in artery you introduce the air, and that air, big volume of air can produce the air embolism. Otherwise, in routine case, there is no chance of any air embolism. Usually it is not there. Okay, sir. Thank you. Next query.
Okay. So when laparoscopic surgery prolonged for so many hours, at that time, what are the we should precaution we should take creating a hypercarbemia or such kind of conditions? Hypercarbemia usually what I mean when the surgery is more than half an hour, and to getting a good picture, you are increasing the flow of carbon dioxide, suppose 30 liters per minute or 40 minutes per minute. So gradually after doing cautery, there is much of gas over there, and you want to wash out immediately, and you flow the carbon dioxide into the abdomen so that this all the field is clear over there. This is what happened. This carbon dioxide, when it comes from the cylinder, it is very cool. So it can produce hypothermia also over there. We can paralyze your bowel over there, and they can create the hypercapnia over there. So to prevent the hypercapnia or oxygen, the carbon dioxide, the hazards, you are advisable to go very slowly and use the carbon dioxide in very low flow, and avoid the prolonged surgeries, complicated surgery in your theater. So in this way, you can prevent this complications of carbon dioxide overdose. And sir, another question. What are the alarming systemic changes we should look for after creating a pneumoperitoneum? After pneumoperitoneum, suppose you are introducing this gas into the abdominal cavity, and abdominal cavity, when your gas is going inside, but pressure is only 6, and abdominal wall is not distending. It means you are in the vein. Venous pressure is 6 millimeter. So your pressure is on your suppletor giving 6 only, but flow rate is high, and the abdomen is not distending. It means you are somewhere else at the wrong side. This is one thing. Another thing, when you put your needle and you go into the bowel, some of the bowel content may come out through this venous needle. At that time, we should be careful and remove your needle and see inside or call your expert to come and see what is wrong over there inside. So, especially after putting venous needle and trocar, you will be very, very careful, and you see whether this abdominal wall is distending or not, and how much of the carbon dioxide you are putting in, and accordingly this abdominal wall is distending or carbon dioxide going somewhere else. Then the questions should come in your mind, and be careful whether you are in the wrong place or in the right place. Okay. Dr. Raghavendra asked something. Dr. Raghavendra? Dr. Raghavendra? Yes, ma'am. Yes, you can ask your query. Hello. 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 Dr. Raghavendra. Sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. My question is, sir, whether these laparoscopic surgery can be done in spinal anesthesia, sir, safely, or they should be done in general anesthesia if surgeon is for beginner. So you can, if you are sure that you can finish this work within half an hour to 40 minutes, 30 to 40 minutes, if you are able to perform this surgery, then we are regularly doing this laparoscopic surgery in spinal anesthesia. But when you think that as a beginner, you are saying that you have a apprehension that we may not finish within the time, and it may take longer time. So better to go through this general surgery. Should not take the risk of it. Okay, sir. Thank you. Okay.
The next query is, what should be the preferred method of sterilization of lab instruments in a center with high volume of patients? The single puncture, this ligation is a very good instruments. I have tried double puncture, single. Initially, when I started my laparoscopy, we were doing 20, 30, 40 cases laparoscopic dissection at that time. And there was a laparocrator and single instrument which we introduced into the abdomen, see with the eye and with the right hand, hold the tube and clip it. So this is very good instrument. If you get this one, this is very, very good instrument and you can do very fast. Okay. Sir, what about this sterilization of telescope? Okay, very good. Sterilization, usually they say, the companies say that sterilization you can autoclave, especially the telescope. But due to fear and due to very high cost, suppose the Striker company, it gives you about 2.5 to 3 lakhs one telescope. And if you destroyed your telescope, then you gone. So what we use, and since my early life, what I use, I have a bag of these telescopes, the cotton bag. I insert this cotton inside the cotton bag, and then after wrapping in the cotton, I introduced into the chamber. And when he start my surgery, my assistant removed this cotton bag from this chamber, and I hold the telescope and wipe with the spirit, Savlon, spirit, betadine, and again this spirit. Then I use it, and I using it since my initial life, and there is no any complication, no infection, because telescope is not going in direct touch with your instrument. So there hardly a infection, especially through your telescope. Usually the infections are created by the hand instruments, which have multiple issue. This is the hand instrument. So if while you are dissecting the structure, there are blood collected over here in these joints. The blood is collected. The blood go inside this cover. So after doing the surgery, what I do, just you do the research on your own. Suppose there is blood over there. It is stained with the blood. And just you wash it with Savlon. It will very rapidly remove this stains with the help of Savlon. But it cannot with the spirit. So I have prepared a drum over there, a container. In container there are Savlon and sterile water, and put it just after finishing the surgery. I put it inside the solution, and after thoroughly rinsing and washing from that solution, I transfer into the sterile water. This neck connector is the sterile water, and from there, after washing it, just we open these instruments. These instruments are dismantled. You open it, and this also can be removed, and this wash it, keep it separately, and when it is dry, then again put the fix over here, and then it hang in the hangers, so that the water percolated over here and come down, and your instruments become dry and sterile. Then I put it in the forming chamber for especially 24 hours. In this way, I sterile my instruments, and till now, after doing thousands of surgery, I don't remember there is any infection on especially on the port. PIL, port site infection, very less infection. I do not remember when I get the infection. So there are many expensive gas sterilization over there and whatnot, but it is very expensive. We cannot afford that one. Right. Okay. Thank you, sir. So this time you can remove it from the sheath, or you can dismantle from on. One thing I suggest you, if you are a surgeon, just go before starting your surgery in operation theater. You see with your all the instruments, how it is working, it is good condition or not. So don't leave on your staff, junior staff.
he has no pain of damaging this instrument. So you check your instrument before surgery, and after doing surgery, you yourself wash these instruments. Since my life, I am always doing these two work. I doing my own. I don't believe others. So I myself I check the instrument before surgery and wash these instruments after the surgery, and put it for dry. And then I ask my worker of the operation theater to keep it or handle it in proper way in the form of chair. So this is very essential. You have to take care of the instrument of your own. Very important point you have told us, sir. Because I think अगर pre-op अच्छा नहीं हो अपने लेप्रोस्कोपी का, तो आई थिंक मेजर प्रॉब्लम्स आती है. कभी कभी इंसुलेशन शीट जो रहती है इवन इंस्ट्रूमेंट का, तो उससे भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है आगे. So this is a very good take-home point for all of you who are interested in laparoscopy, that whatever the sir has already pre-op में आपका अच्छे से ध्यान होना बहुत जरूरी है, चेकलिस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मायने रखता है. Whenever you are performing any kind of a surgery, especially in the laparoscopy, you should have that knowledge कि अपने जो instruments है वो properly है या नहीं है, क्योंकि ये फिर आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, जो सर्जन की वजह से सर्जन के मतलब इससे हो सकती है. ये चीजों पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है. कभी कभी देखा है प्रियंका कि ऑपरेशन थिएटर में सर्जन सर्जरी कर रहे हैं, कभी इंस्ट्रूमेंट उनको प्रॉपर नहीं मिला तो वो गुस्से के मारे इंस्ट्रूमेंट को फेंक देते हैं और सारे स्टाफ को गाली देते हैं, तुम इस तरह से नहीं करते हो, तुम इस तरह से नहीं करते हो. और ये नहीं कि आज उन्होंने कह दिया कल वो ठीक हो जाए, दोबारा फिर वही होता है, लाइफ उनका वैसे ही हेल हो जाता है. बिफोर स्टार्टिंग द सर्जरी ही इज हाईलाइटेड 11,000 वोल्ट करंट. कैसे वो सर्जरी करेगा? सो सर्जन की जैसे क्वालिटी हमने बताया था बेसिक में, सर्जन को जरा क्वाइट होना चाहिए, कूल होना चाहिए और विजिलेंट होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए. आपको ये जानना चाहिए कि कौन सा हमारा स्टाफ कौन सा काम बढ़िया से कर सकता है, उसको वही काम करवाइए. अगर वो नहीं जानता है आप उसको टेबल हमारे नीचे ऊपर वो नहीं करता है. अब हमारे यहाँ कस्टम है कि हमारे ऑपरेशन थिएटर में जैसे एनेस्थीसिया हो जाएगा, जैसे पहला पोर्ट डालेंगे उसके बाद हमारे एनेस्थेटिस्ट का जॉब है कि हमको पोजीशन बना के दें और वो फिक्स है कि हमका वही करेगा. हमारे कैमरा देने के लिए वही कैमरा देगा, दूसरा हमको देगा नहीं, क्योंकि हमारा बहुत हाथ से छूट जाता है. किसी को मालूम है कैसे सेफली उसको से निकालना है, कैप हटाना है, कैसे हमको पकड़ाना है, सेफली उसको हम पकड़ के ले सकते हैं. तो हर आदमी हर काम को अच्छे ढंग से नहीं कर सकता है. तो आप अपना इसको ठंडा रखने के लिए, क्योंकि जितना ठंडा रखोगे सिंपल कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी भी सिंपल हो जाएगी, और जितना ये इरिटेटेड रहेगा सिंपल सर्जरी भी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी. इसीलिए मैं शुरू में कहा कि सर्जन इन द पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सर्जन का एटीट्यूड कैसा है, सर्जन कैसा बिहेवियर करता है, सर्जन कितना कूल माइंडेड है, इस पर सर्जरी का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है. नॉट ओनली इंस्ट्रूमेंट ओनली. अब जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, अब ये इंस्ट्रूमेंट कभी कभी जो टोकल से हम लोग इसमें डालते हैं, सपोज आई एम पुटिंग इनसाइड, सिंपल थिंग आई एम टेलिंग यू. देखो इसको अगर हम डालते हैं ना, इसको अंदर अगर डालते हैं तो इसको डालते समय ये जो फ्लैप है ना, इस फ्लैप को जब अंदर गया तो फ्लैप को दबा लेना चाहिए, बहुत आराम से चला जाता है इंस्ट्रूमेंट. और निकालते समय भी आराम से निकालना चाहिए. कुछ सर्जन क्या करते हैं, इसे जबरन करते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे खींचते रहते हैं, तो इसका शीट खराब हो जाता है, इसके नीचे का ट्रम्पेट वाल्व खराब हो जाता है, और वो सर्जन फिर उससे उस इंस्ट्रूमेंट से लड़ते रहते हैं. इसीलिए हमने पहले ही कहा था, सुश्रुत से कहा है कि यू नो हाउ योर इंस्ट्रूमेंट इज वर्किंग. तो आप अपने इंस्ट्रूमेंट के पहले हाथ में लो, इसको पहले हाथ में लो और करते समय देखो कि हाउ इजीली इज इट गोइंग. इस फ्लैप को जब हम पुश करते हैं बहुत आराम से चला जाता है, बहुत आराम से आता है. क्योंकि अब क्या है ना कि बहुत से मैन्युफैक्चरर्स हैं और बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं और सब में थोड़ा बहुत अंतर है, और सारे इंस्ट्रूमेंट वाले बनाने वाले आपके एटीट्यूड को नहीं जानते, तो आपको उनके हिसाब से आपको अपने को ढालना पड़ेगा. सपोज जैसे आप ये इंस्ट्रूमेंट है, इसमें देखो यहाँ पर ये लॉक है, ये किसी को ये लॉक अच्छा नहीं लगता है, किसी को यहाँ कानी उंगली से चला के वो लॉक अच्छा लगता है. तो आपको ऐसा हैबिट बनाना चाहिए कि ये भी हम कर सके,
क्योंकि आप डिफरेंट जगह पर आप जाओगे सर्जरी करने, तो ये भी आपको करने आना चाहिए, ये भी आपको करने आना चाहिए, ये भी आपको सीखना है, आपको ये भी आपको इधर फिगर वाला भी सीखना है। तो सर्जन को भी अपने आप को ऑलवेज मॉडिफाई करना रहता है। सर्जन होल लाइफ सीखता है, होल लाइफ सीखता है सर्जन। सारे इंस्ट्रूमेंट अलग अलग काम करेंगे, उसके हिसाब से आपको चलना है, आपके हिसाब से इंस्ट्रूमेंट नहीं चलेगा। इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्किंग बढ़िया से करता है आपको उसको देखना पड़ेगा। अब जैसे और एग्जांपल बताएंगे, जैसे ये बाइपोलर लिगासियर। अब बाइपोलर लिगासियर में क्या है, हमने ये महसूस किया कि अगर देयर इज वेसल एंड सपोज दिस इज वेसल एंड दिस इज द टिश्यू, आपने इस पर बाइपोलर फोर्सेप्स लगाया, लिगासियर लगाया, तो आपको जो मेन एम है कि आपका ये आर्टरी जो है ना ब्लॉक हो जाए, आर्टरी कॉटलाइज हो जाए, आर्टरी प्लग इन हो जाए। वो कैसे होगा, जब हीट भीतर से ऊपर आएगा, क्योंकि आपका ऊपर से अगर आए तो व्हाइट हो गया या तो चारिंग हो गया, आप समझे कि हमारा तो पॉटरी हो गया। लेकिन नहीं, आपने कभी देखा है समोसा कैसे बनता है? समोसा बनाने के लिए स्टार्ट में जो समोसा बना देते हैं उसको ठंडे तेल में डालते हैं, बहुत कम हीट में डालते हैं, और बहुत धीरे 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 उसको बर्न करते, बॉयल करते हैं, तब एक कलर में समोसा निकलता है। कहीं आधा जला कहीं पका नहीं निकलेगा, पूरा अंदर से बाहर तक पका पका वो निकलेगा। उसी तरह से जब आप बाइपोलर इस्तेमाल करते हो, तो बाइपोलर इस्तेमाल करते समय आपको अपना इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो इंटेंसिटी है उसको आपको रेगुलेट करना है। यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द मिनिमम। आप मिनिमम पर जाओगे, मिनिमम से करोगे, थोड़ा टाइम तो लेगा, लेकिन आप देखना कि एक तो बहुत बढ़िया से हीट होगा, धीरे धीरे नीचे से डीनेचर होगा, प्रोटीन डीनेचर होकर वो प्लग इन हो जाएगी, वेसल कोगुलेट होगा, तब ऊपर जाके स्ट्रक्चर आपको चारिंग नहीं होगा, उसमें ब्लैकनिंग नहीं होगा। उसमें देखा गया है कि रीब्लीडिंग के चांसेस ऐसे किस्म ज्यादा होता है जो कि बहुत हाई इंटेंसिटी पर कोगुलेशन करते हैं। जो लो पे चलते हैं उनका चारिंग नहीं होता है, फ्यूम ज्यादा नहीं निकलता है, और केवल वाटर वेपर्स निकलते हैं। लिगासियर भी अगर इस्तेमाल करोगी तो वाटर वेपर्स निकलेगा, उसे बहुत लो करंट रखना चाहिए, और जितने लो पर रखोगे उतना अच्छा कोगुलेशन होगा, रीब्लीडिंग के चांसेस नहीं होगी। तो ये सब भी आपको इंस्ट्रूमेंट के साथ लर्न करना चाहिए, आपको जानना चाहिए हाउ, और सब मशीन अलग अलग काम करेगा। कोई आपका बाइपोलर 9 पर काम करेगा, कोई आपका लिगासियर 4 पे काम करेगा, कोई 15 पर करेगा, 12 पे करेगा। तो आपको खुद रेगुलेट करना होगा, खुद करके देखना होगा कि कितने हमारे इंटेंसिटी पर हमारा इंस्ट्रूमेंट कितना बढ़िया काम करता है। तो सर्जन की बहुत, इसलिए मैं बार बेसिक कहता हूँ, सर्जन 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 एंड द पेशेंट। सर्जन और पेशेंट अगर प्रॉपर रहे, सर्जन ढंग से रहे और पेशेंट सिलेक्शन अगर बढ़िया करता है, रिजल्ट रहता है। हमारे देशपांडे साहब यहाँ डिपार्टमेंट जब बीएचयू में थे, तो एक तरफ मॉडर्न सर्जन मॉडर्न सर्जरी करते थे, एक तरफ देशपांडे साहब आयुर्वेदिक सर्जरी करते थे। तो देशपांडे साहब बोलते थे कि मैं इन दांतों के बीच में जीव की तरह रहता हूँ। कैसे रहता हूँ कि उन लोगों के केसेस में हमेशा डीओटी होता रहता था, यूजुअल चीज है, लेकिन इनके केस में हमारे रहते 30 इयर्स के उनके सर्जरी के कैरियर में एक भी डीओटी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि क्या डीओटी नहीं होने से कि मैं बहुत महान बड़ा सर्जन इसलिए नहीं हुआ? ओनली सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट। सुश्रुत ने भी कहा है कि तुम जब प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो तो समझो कि तुम नदी के किनारे बैठे हो, उस नदी में डेड बॉडी भी जा रहा है, फूल भी जा रहा है, गंदगी भी जा रहा है, लकड़ी भी जा रहा है, शहर का गंदगी भी बह रहा है, तुमको क्या लेना है उसमें से? फूल लेना है, बढ़िया बढ़िया जैसे सेलेक्ट करना है। इसलिए पेशेंट के समुद्र में, नदी में आपको उस पेशेंट को सेलेक्ट करना है जिसपे आपको रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। आपको इसलिए बताया हमने, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में पहले जो एंडोलॉजिस्ट अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट पर जाके बैठते थे और उसको देखते हैं गॉल ब्लैडर कितना मिलीमीटर का थिकनेस है, उसमें कोई स्ट्रक्चर वगैरह अधेरन है कि नहीं, उसमें कहीं उसको और एबनॉर्मलिटी है कि नहीं है, तो उससे एक आइडिया मिल जाता था कि विच गॉल ब्लैडर इज सिंपल, आई कैन डू इट, and which gallbladder is difficult, I will do afterwards, and after finishing the OT लास्ट केस करेंगे या किसी ठंडे दिमाग से करेंगे, क्योंकि ओटी में 10 केस 12 केस 14 केस 15 केस करना पड़ता था, तो उसमें सिलेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। आज भी हम लोग जैसे जो इंसिडेंटल गॉल स्टोन्स, मरीज को समझ लो कमर में दर्द है, उसने एक अल्ट्रासाउंड करा लिया, अब देखा कि गॉल स्टोन्स है। ऐसे स्टोन्स गॉल ब्लैडर करने वाले सिंपल होते हैं, वो उससे प्रॉब्लम उसमें नहीं होता है।
और जो कि मल्टीपल अटैक्स होते हैं, उसको मल्टीपल इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ, उसको ज्यादा एडेरेंस और उसको चिपका होने के चांसेस, डिस्टॉर्डेड एनाटॉमी के चांसेस, क्योंकि गॉलब्लैडर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हर 2 पेशेंट में एक तरह का मिलता नहीं, बहुत डिफरेंट टाइप का उसका जो कोर्सेस ऑफ सिस्टिक सीबीडी और सिस्टिक आर्टरी का कोर्सेस बहुत वेरी करता है। तो इसलिए सिलेक्शन ऑफ पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम टेलिंग बेसिक थिंग इज सर्जन एंड पेशेंट। आपको ये भी बता दूं, हमारे यहाँ इनिशियल लाइफ में हमारे बीएचयू के जितने रिटायर्ड सर्जन थे उन सबको मैंने हेल्प किया था। एक यहाँ पर जनकल्याण हॉस्पिटल था, पहले नया प्राइवेट हॉस्पिटल बनारस पहला खुला था, तो आई वाज इंचार्ज ओवर देयर, जितने सर्जन सब उसको ज्वाइन करते थे। तो एक डॉक्टर एच.सी. सामंत थे, डॉक्टर हरीश सामंत, ENT सर्जन। तो ENT सर्जन होते हैं डॉक्टर रमन सिंह, जानते हो एक BA-MS लड़के में और MBBS लड़के में क्या डिफरेंस है? MBBS लड़के को सोने का गिल्ली मिलता है, सिक्का मिलता है पास होने के बाद, तो वो बड़े गम में रहता है, खुश में रहता है कि अरे हमको तो सोने का सिक्का मिला है, आई एम सो एंड सो एंड सो। और एक आयुर्वेद वालों को, BA-MS वालों को चांदी का सिक्का मिलता है। तो जानते बच्चे क्या करते हैं, मेहनत करके उसको रगड़ के और डॉक्टर प्रियंका जैसा गायनेकोलॉजिस्ट बनते हैं। ये उनका खाना था कि उसको रगड़, प्रियंका ने कितना अपनी इनिशियल लाइफ में लड़ा है हमको मालूम है। वैसे बेटा एक चीज सजेशन था प्रियंका, देखो अभी OBGYN तुम्हारा छोटा है, तो उसको और बड़ा बनाने के लिए हम चाहेंगे कि जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स वाले हैं ना, उनको भी अपने साथ जोड़ो, उनको भी जोड़ना चाहिए। अब जब आपको बहुत बड़ा बन जाएगा तब फिर अलग अलग करेगा। तो ये एक अच्छा मेरा हमको लगा कि आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए शल्य तंत्र वालों को भी जोड़ो, क्योंकि आप देखिए आप जिस फील्ड में हो ना, शल्य तंत्र प्रोसेस दोनों पार्ट है। हमारे प्रेमवती तिवारी एकदम रॉ थी, सिंपल BA-MS को डॉक्टर देशपांडे ने गायनेकोलॉजिस्ट बनाया। उस जमाने में एक सर्जन हेड टू टो सारी सर्जरी करते थे। आपको ऐसा किताब भी है डॉक्टर देशपांडे का, जिसमें हेड से लेकर नाखून तक की सारी सर्जरी दी हुई है। तो वो लोग गायनेकोलॉजिस्ट और ये सब अलग अलग नहीं थे उस जमाने में, तो सारी सर्जरी करते थे। तो वेंसडे को केवल गायनी सर्जरी करते थे और डॉक्टर प्रेमवती को असिस्टेंट बना के वो ट्रेन करते थे, उनको सिखाया था उन्होंने। और ये जज्बा, ये उनका बहुत अच्छी लेडी प्रेमवती तिवारी ने टेक्स्ट बुक भी लिखा है प्रसूति तंत्र के ऊपर। तो ऐसा वो अपने आप को बना कोई जैसा आप अपने को बना पाई। तो बेटा आप यूनियन बनाओ और लोगों को भी जोड़ो और सबको जोड़ करके बहुत बड़ा विराट करो। और ये प्रोग्राम हम लोग को चलते रहना चाहिए, और कभी कभी लिविंग प्रोग्राम में रखो तो उसमें और ज्यादा अच्छा होता है। लीव प्रोग्राम भी अपने आप कभी वर्कशॉप, यू आर एबल टू डू इट, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और हम आगे तो जरूर एंडोस्कोपी सोसाइटी के लिए जरूर सोचेंगे सर, और अगर आप लोगों के हमें आशीर्वाद रहे तो डेफिनेटली लाइव तो करके दिखाएंगे, फिर एंडोस्कोपी सोसाइटी जरूर क्रिएट करेंगे, और कुछ ही दिनों में वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट आल्सो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक जतेंद्र शर्मा, डॉक्टर जतेंद्र शर्मा। हेलो, या प्रणाम प्रणाम डॉक्टर अमन सर, डॉक्टर जितेंद्र सर। My query is, port site infections are commonly encountered during post-op. So how to deal with such kind of port infections after, in post-op? देखो, इन्फेक्शन में कोई गारंटी नहीं ले सकता कि इन्फेक्शन नहीं होगा। अमेरिका में भी 1 to 3% तक पोर्ट इन्फेक्शन रिपोर्टेड है, इंडिया में 20 to 30% तक पोर्ट इन्फेक्शन रिपोर्टेड है। लेकिन पोर्ट इन्फेक्शन हमारा न हो उसके लिए अपना पूरा भरसक कोशिश करना चाहिए। पोर्ट इन्फेक्शन होगा कहां से? आइदर द सोर्स फ्रॉम द पेशेंट इटसेल्फ or the source from the atmosphere of operation theater or your instrument or your surgeon yourself। तो इंस्ट्रूमेंट को हम लोग स्टरलाइज करके रखना है। जो भी आपका जो टेलीस्कोप क्या कहते हैं, ये जो हैंड इंस्ट्रूमेंट्स है, खास करके पोर्ट, यही तो पोर्ट क्रिएट करेगा। तो इसको कम से कम इस रबर पार्ट को निकाल के बीच में हम लोग इसको ऑटोक्लेव भी कर सकते हैं। इसको निकाल लिया, फिर इसको हमने खोल दिया, इसमें से देखो इसको खोल दिया, खोल के इसमें भी देखो ये फ्लैप है, इस फ्लैप, ये फ्लैप है, ये देखो फ्लैप है, ये फ्लैप देखा, इसमें रबड़ है, इसके बाहर भी रबड़ है।
तो ये रबड़ सबको निकाल के इसको दूसरी चीज में ऑटोक्लेव करो, कहीं से प्रिपेयर कर लो, स्पीड वगैरह में डाल लो इसको, और इन सब चीजों को जो खाली मेटल है इसको बीच में खाल के देखो, अब इस सरफेस से इन्फेक्शन होगा, तो इसको बढ़िया से ऑटोक्लेव भी कभी कभी कर लेना चाहिए, और सर्जरी के बाद तुरंत बढ़िया से इसको साफ करना चाहिए, साबुन से साफ करो, फ्लशिंग वाटर से साफ करो, इसको बढ़िया से सुखा के, अगर बहुत आप केसेस नहीं करते हो तो परमानेंट चैम्बर में रख दो, और ज्यादा केसेस करते हो तो इसको ऑटोक्लेव कर लिया करो, ये करो। ये नंबर चीज ये हो गया। दूसरा ये है कि कभी कभी क्या होता है कि ऑपरेशन थिएटर में हम लोग पेशेंट का शेविंग करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। शेविंग आपको करना है तो 1 डे बिफोर करना, उस दिन करोगे तो आपका इन्फेक्शन होगा। 2 चीज हो गया। तीसरा है पेशेंट मान लो स्मोकर है, डायबिटिक है, कहीं कोई इन्फेक्शन का इन्फेक्टिव सोर्स है उसके बॉडी में, उससे भी उसका इन्फेक्शन हो सकता है। और ऑपरेशन थिएटर में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहता है, कपड़ा पहन के लोग अपना ओटी बाहर कहीं कपड़ा पहन के फ्रीली ओटी में घूमते हैं, ओटी का ड्रेस नहीं पहनते हैं। चौथा चीज है ऑपरेशन थिएटर में वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ एयर होना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीजों को अगर ध्यान रखेंगे, आप इंस्ट्रूमेंट का ध्यान रखेंगे, पेशेंट को सर्च करेंगे, वॉच करेंगे कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है इसको, आप उसके हिस्ट्री से ले सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं, उसका टोटल डिग्रेसिल करा के उसको ब्लड टेस्ट करा के देख सकते हैं, डायबिटिक है कि नहीं देख सकते हैं, स्मोकर है कि नहीं देख सकते हैं। इन सब चीजों को जब आप ख्याल करेंगे कि कैसे इन्फेक्शन होता है, कंटामिनेशन कैसे होता है, तो कंटामिनेशन, इन्फेक्शन, इससे बचने के लिए आप सर्जन अपने तरफ से तैयारी करिए, ओटी में भीड़ कम रखिए, वेंटिलेशन रखिए, इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर स्पेशलाइज करके रखिए, तब मेरा ख्याल है कि कोर्ट साइज इतना होगा नहीं। दूसरा कोर्ट साइज का क्या है कि जहां भी हमारे जो बीएचयू के 2 ऐसे सर्जन्स हैं, डॉक्टर उडुप्पा एंड डॉक्टर देशपांडे, जिन्होंने आयुर्वेद फील्ड से मॉडर्न में गए हैं और उन्होंने बहुत रिसर्च किया है खास करके वुंड के ऊपर। तो डॉक्टर उडुप्पा कहते थे कि लव विद द टिश्यू, लव विद द टिश्यू, लव विद द टिश्यू मीन आप कभी भी टिश्यू को क्रश मत करिए। कहीं भी आप देखिए कि टिश्यू अगर ज्यादा डैमेज हो रहा है तो वहां जरा आपको बचना पड़ेगा। जैसे आप पोर्ट बनाते हो, पोर्ट में है कि 10 mm का आपका इंस्ट्रूमेंट डालना है, तो 10 mm का ओपनिंग बनाओ ना भाई, और उसको आप मान लीजिए कि 8 mm का बनाए और जबरदस्ती इंस्ट्रूमेंट को उसी में ठूस रहे, उसी में उसको घुसा रहे, तो उससे आप तो ट्रामा कर रहे हो ना, आप डैमेज कर रहे हो ना, उससे भी वो डैमेज होता है। तीसरा चीज जो आप स्टिच लगाते हो, स्टिच किस लिए लगाते हैं? स्टिच लगाते हैं तो जस्ट अप्रोक्सीमेट द स्किन, ये बहुत टाइट नहीं है। बहुत लोगों को देखोगे कि आपका सर्जरी बस्ट एब्डोमेन हो जाता है, बहुत लोगों को देखो स्टिच करने के बाद स्टिच से बहुत पसेज निकलने लगते हैं। एक तो कलेक्शन होने का चांस होता है अंदर, कभी कभी स्टोन छोटा मोटा टुकड़ा अंदर छूट गया तो भी उससे इन्फेक्शन होता है। तो एक तो टिश्यू को क्रश होने से बचाओ, प्रॉपर इंसिजन लो, प्रॉपर उसका लेंथ रखो कि प्रॉपरली उसमें इंस्ट्रूमेंट आराम से चला जाए, बहुत ज्यादा उसमें फोर्स न लगाना पड़े। और कभी कभी जब हम कोई इन्फेक्टेड मटेरियल उससे निकालते हैं तो भी इन्फेक्शन होने का चांस, जैसे अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स हमने किया और उसी ओपनिंग से हमने अपेंडिक्स को खींच लिया, गॉलब्लैडर हमने किया उसी गॉलब्लैडर को ओपनिंग से हमने पोर्ट से खींच लिया, तो वो कंटामिनेट हो गया। अगर इन्फेक्टेड गॉलब्लैडर अपेंडिक्स तो इन्फेक्शन जरूर हो जाएगा। तो उसे बचने का तरीका आप एंडोबैग इस्तेमाल करो, और कभी कभी जो अपेंडिक्स है उसको कैनुला के अंदर पुल कर लेते हैं, जैसे ये आपको गया है यहाँ से, ये गया, अब यहाँ से अपेंडिक्स पकड़े, अपेंडिक्स को पकड़ के स्ट्रोकर के अंदर ले आए ऐसे, अब फिर ट्रोकर को सामने से निकाल लिया, तो कोई कंटामिनेशन नहीं हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा स्टडी करना है कि कहाँ से कंटामिनेशन होता है। अभी एक अच्छा चीज ये हो रहा है, यूपी में भी कुछ मॉडर्न सर्जन ने किया है, ऑपरेशन थिएटर में धूपन चिकित्सा किया है, धूपन क्रिया किया है। अब जैसे है ना कि वेंटिलेशन होना चाहिए, इसका मतलब कि आपको एटमॉस्फेयर में भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि आपको हार्म पहुंचा सकते हैं, वायरस है जो कि आपको हार्म पहुंचा सकते हैं। तो हम लोग इस पे वर्क कर सकते हैं प्रियंका, कि हम लोग ऐसा क्या चीज हमारे शास्त्र में दिया हुआ है जिसको हम धूपन द्रव्य बना करके ऑपरेशन थिएटर में 1 डे बिफोर उसको इस्तेमाल करें। फॉरन आप जिसे इस्तेमाल करते हो, आप क्यों नहीं धूपन का इस्तेमाल कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते? तो हम लोग इस चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हम लोग क्या बहुत सी ऐसी चीजें मिलेंगी अपने शास्त्रों में खोजने से, जैसे आपको हमारे इनिशियल लाइफ में एक पेशेंट ने सिजेरियन कराया, सिजेरियन कराने के बाद उसका पूरे एब्डोमिनल स्टिच से खूब पोरिंग पस आ रहा था, सारे एंटीबायोटिक उसने इस्तेमाल कर लिए, बिल्कुल नहीं ठीक हुआ। हमने पूरा ड्रग लिस्ट देखा, कोई एंटीबायोटिक बचा नहीं था कि अब मैं दूं।
तो मैंने क्या किया, अब यहीं पर जो हमारा एम है कि कॉम्प्लीमेंट दिस आयुर्वेदा विथ मॉडर्न एंड मॉडर्न विथ आयुर्वेदा। हमने मॉडर्न छोड़ दिया वहां पे। तब हम सुश्रुत का चैप्टर उठाए, नग्रोधादि गण चिकित्सा। नग्रोधादि गण में जितनी औषधियां हैं सब है शोधने, रोपणे, सवर्णीकरण। सवर्णीकरण का कंसेप्ट मॉडर्न साइंस में नहीं है, केवल आयुर्वेद में। तो उसमें से जितनी औषधियां थी 15, 20, 25 औषधियों का हमने कलेक्ट किया। कलेक्ट करके उसका तैल पाक करा लिया। हमारे जो मैन्युफैक्चरर उनको हमने दिया कि इसका तैल पाक करके हमको तेल बनाकर दे दो। उसका नाम दिया हमने शोधन तेल। अब उस शोधन तेल को खाली इस्तेमाल किया, उसका वुंड एकदम हिल हो गया। आज भी शोधन तेल मैं इस्तेमाल करता हूं जहां भी हमको केमिकल डिब्राइडमेंट करना है, डर्टी वुंड है, जहां दुष्ट व्रण है, उसको शुद्ध व्रण करने के लिए हम वो इस्तेमाल करते हैं। हम आयुर्वेदिक, हम मॉडर्न के सर्जन जरूर है, लेकिन 80% आयुर्वेदिक मेडिसिन लिखते हैं। एक दिन के बाद एंटीबायोटिक किसी को देते नहीं है, बस खाली वो आपका जो औषधि है, हमारा जो हमने बनाया है कुछ एंटीबायोटिक टाइप का, जो एंटीबायोटिक कह लीजिए, लेकिन मॉडर्न का जो भी हमारे मैंने दुष्ट वर्ण में इस्तेमाल करते हैं औषधियाँ, उनको टैबलेट वगैरह बना लिया ना, वही सब हम इस्तेमाल करते हैं। शोधन तेल इस्तेमाल करते हैं, रोपण जात्यादि तेल इस्तेमाल करते हैं। अभी जो हमारे बनारस में एक एक्सीडेंट हो गया था, करीब 150 लोग जल गए थे, पंडाल जल गया था। तो पेशेंट सब हमारे एडमिट होता, कमिश्नर, डीएम और आके सब देखते हैं तो जात्यादि तेल से ड्रेसिंग कर रहे हैं, क्या है डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा हेल्प करता है। उसमें से कमिश्नर बोलने लगे, अरे ये बहुत अच्छा आयुर्वेद का मेडिसिन है, हील करता है, हम भी इस्तेमाल करते हैं, हमको पाइल्स में इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग अपने तरफ से, अभी भी वुंड का क्षेत्र ऐसा है बहुत विराट है। हम लोग प्रिवेंशन का जो आप बता रहे हो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो पोर्ट साइड इन्फेक्शन के लिए हम लोग कंटामिनेशन से बचने के लिए, इन्फेक्शन से बचने के लिए, इन्वायरमेंट को शुद्ध करने के लिए हमारे यहाँ बहुत से मटेरियल्स हैं। हम लोग आप प्रियंका के माध्यम से हम उस पर रिसर्च करेंगे, रिसर्च करके उसको ले आकर दुनिया को दिखाएंगे। अब ये नहीं कि खाली उन्हीं का हम नकल करेंगे, उन्हीं का नकल करने से नहीं है। आज हम जरूर डिफिशिएंट उनसे सीखेंगे, उनको गुरु बनाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ जो चीज है उस पर हम रिसर्च करेंगे, वो जवाब उनको हम देंगे। कोरोना ने दिखाया है, कोरोना काल में यही तो समझ में आया कि एकदम मॉडर्न पूरा हाथ फैला दिया। आज जो भी आयुर्वेद के ट्रीटमेंट में रहे ज्यादातर वही लोग बचे। मॉडर्न में जो लोग गए उनका कोई दवाई नहीं था, कैंसर की दवाई दे रहे हैं, टीबी का दवाई दे रहे हैं, सब गिनी पिग बना के सबको एक्सपेरिमेंट करना मजबूरी थी उनकी, क्योंकि उनके पास नहीं था। लेकिन हमारे पास जल रेमेडी है, तो हम लोग इन्फेक्शन में बहुत काम कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ यू। ठीक है, Hats off to you, sir. Means this is incredibly very nice concepts, and you are putting all the efforts with Ayurvedic concepts also and with allopathic concepts also. Means the surgical is at most at the high level of yours, there is no doubt. But if people are considering themselves to means go with the Ayurvedic medicines after the surgery also, so it will be more beneficial and more means useful for our faculty also. So I really appreciate this. This is प्रियंका, मैं बता सकता हूँ, मैंने हंड्रेड्स ऑफ हिस्टेक्टोमी को प्रिवेंट किया है। जो ब्लीडिंग, यूट्राइन ब्लीडिंग, अगर उसमें फाइब्रॉइड नहीं है तो मेरा ट्रीटमेंट होता है अशोकारिष्ट, पदरांकर लौह, और इन दोनों औषधियों से सारे पेशेंट का मेंस्ट्रुएशन एकदम रेगुलेट हो जाता है, पेशेंट बिकम हैप्पी और यूट्रस भी उसका सेफ हो जाता है। इस पर भी आप करके देखना, बहुत आनंद आएगा। बहुत से पेशेंट, हमने एक बार यहाँ हिस्टेक्टोमी किया, वजाइनल हिस्टेक्टोमी किया, आपको बताता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकरेज करेगा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन हमारा काम करता, हम लोग कर सकते हैं। वजाइनल हिस्टेक्टोमी किया, हिस्टेक्टोमी करने के बाद 3rd डे 4th डे कैथेटर निकाल देते हैं। कैथेटर निकाले कि हॉस्पिटल में हम काम करने जाते तो वहाँ चले गए। वहां जब गए तो हमारे पास एक फोन आया कि मरीज बहुत चिल्ला रही है। मैंने कहा क्यों? बोला बहुत दर्द हो रहा है। हमने आके देखा, क्यों, क्या हुआ? बोले कि जब भी पेशाब करते बहुत दर्द होता है। अरे इतना दर्द होता है? हमने एंटीबायोटिक चेंज किया, उसको कोई आराम नहीं हुआ। तो हमने कहा कि अच्छा आप यूरोलॉजी विभाग में चले जाए। तो बोले अरे वहीं से तो हम आ रहे हैं, सब गांव वाले पकड़ के रहे, बढ़िया सर्जन, आप ऑपरेशन करेंगे, हमारा ठीक हो जाएगा। तब मेरा स्ट्राइक किया कि अरे ये तो यूरोलॉजिस्ट भी ढूंढ कर, तब मैं क्या करूं? तब मैं उसको वस्ती चिकित्सा किया। तो पहले दिन जब उनके वस्ती चिकित्सा किया, पहले दिन हमको रिस्पॉन्स मिला, पेशेंट का बर्निंग खत्म हो गया। आज बहुत सी यूटीआई के पेशेंट में इनका ठीक नहीं होता है, मैं उनको वही चिकित्सा करता हूँ। उनको अगर हमने वस्ती चिकित्सा किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब इन सब चीजों से अपना बूस्ट होता है कि यस आई कैन डू ऑल्सो। हमारे पास भी रेमेडी है जहां आपके पास नहीं है, और जहां हमारे पास नहीं है वो आपसे हम लेंगे। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए, म्यूचुअल होना चाहिए। गवर्नमेंट भी यही चाहती है और पूरे वर्ल्ड की नीड भी यही है
जहां हम नहीं है वहां आप है तो आपसे लेंगे, जहां आप नहीं वो हमारे पास है, हम आपको देंगे। ये म्यूचुअल चलेगा तो आप देखना एक बड़ी अच्छी साइंस बन के निकलेगी। Very nice. Right, sir. जी। ओके सर, एक और क्वेश्चन था। पूछो पूछो जी सर। सर, what should be the flow rate, maximum CO2 pressure in pediatric, adult and obese patient? और पेडियाट्रिक्स में यूजुअली 8 to 10 प्रेशर में काम चल जाता है, 6 to 8 प्रेशर में काम चल जाता है। और जो एडल्ट होते हैं उनसे हम लोग का जैसे कि वो डायग्नोस्टिक करना है तो 10 पर भी हो जाएगा, 12 पर भी हो जाएगा। और केवल प्रेशर इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रेशर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रॉपर डिस्टेंशन मिल रहा है कि नहीं एब्डोमिनल वॉल का। जो वर्किंग फील्ड है आपका, जहां आप काम कर रहे हो उस जगह पे आपको कोई हिंड्रेंस तो नहीं है, कोई हमारे एब्डोमिनल वॉल तो वहां नहीं आके चिपक जाए, सब सर्जरी नहीं कर सकते हो। तो कोशिश करना चाहिए आपको वही जो हमने मैनिपुलेशन बताया पॉटरी में, प्रियंका जी को हमने बताया, जो कि आप बाइपोलर लिगर से इस्तेमाल करते हैं, आपको टाइट्रेट करके देखना पड़ेगा। ईच एंड एवरी पेशेंट इज डिफरेंट। अब फर्स्ट जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो हमारा स्टूडेंट कर रहा था उसका देखो एब्डोमिनल वॉल कितना ऐसे फुला हुआ था, और मैंने जो किया था उसमें एब्डोमिनल कितना छोटा था। तो दोनों में गैस का जो है वॉल्यूम है वो डिफर करेगा। यूजुअली 1.5 to 2 लीटर्स में एब्डोमिन प्रॉपर डिस्टेंड हो जाता है कि हम लोग प्रॉपर डाल सकते हैं। लेकिन आपने कहा बच्चों में जैसे 6 से 8 के करीब प्रेशर से काम चल जाता है, और वहीं 10 to 15, 16 जैसे इनिशियली कभी कभी क्या होता है कि ट्रोकर हमको डालना पड़ता है, तो कभी कभी प्रेशर हम लोग 14, 15, 16, 17, 18 डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी हम लोग उतना कर देते हैं। लेकिन जब सर्जरी शुरू हो जाता है तब उसको मिनिमम पर अपने स्टाफ को बोल देते हैं कि उसको मिनिमम कर दो। तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा इन सब चीजों का, पॉटरी पर ध्यान रखना पड़ेगा, इंसर्वेटर पर ध्यान रखना पड़ेगा, लाइट पर ध्यान रखना पड़ेगा, ऑपरेशन थिएटर का लाइट है उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप मॉनिटर पर देख रहे हो तो वहां पर ग्लेयर ना हो। अब 20 लक्स अगर लाइट है ऑपरेशन थिएटर का तो सफिशियंट, उससे ज्यादा का आजकल जो लाइट आ गया इल्यूमिनेटेड खूब ज्यादा, उससे मैंने अयोग अतियोग मिथ्या योग हमारे शास्त्र में है ना बेटा। तो आज का जो लाइट का जो हम लोग अति योग हो गया है, एलईडी खूब चमकदार लाइट है वो नुकसान करता है, तो उतना लाइट हमको प्रॉपर चाहिए। तो रिगार्डिंग अगेन योर प्रेशर, बच्चों में 6 से 8 कर रहता है, बड़ों में 10 से 18, 19 तक डिपेंडिंग अपॉन द वर्क होता है। और रेट्रोपेरिटोनियल एरिया में जब जाते हैं वहां थोड़ा सा और ज्यादा होता है। और सर ओबेज में कैसा रहता है? और ओबेज में भी अब बताए ना कि वो प्रेशर से उतना मतलब नहीं, ओबेज में मतलब ये है कि आपका कंसेप्ट ये है कि मिनिमम प्रेशर रहना चाहिए, लेकिन आफ्टर वर्किंग फील्ड में तो आपको एरिया बड़ा मिलना चाहिए काम करने का। तो ओबेज वाले में भी आप गैस लेके देखो कि कितने, सपोज 14 पर नहीं हुआ तो 16 कर लिया, लेकिन जब प्रॉपर ऊपर डाल लिया, प्रॉपर आप काम वर्किंग कर रहे हो, आपको कोई हिंड्रेंस नहीं है, तो प्रेशर को कम कर दो। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और उसके लिए स्टाफ को ट्रेन करना। सभी स्टाफ प्रेशर कम दौड़ेंगे सभी के हम कर देंगे, लेकिन फिर उसमें गड़बड़ करेंगे, आपका सर्जरी डिस्टर्ब होगा। तो आप प्रॉपर स्टाफ को पहले उसको ट्रेन करिए ऑपरेशन थिएटर के सामने। इन बिटवीन अगर हमको प्रेशर कम करना है तो ऐसे करना, इन बिटवीन अगर प्रेशर बढ़ना है तो ऐसे बढ़ाना, सभी नहीं कर पाएंगे, तो इसको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ओके सर, एक और क्वेरी है कि जब भी हम लैब सर्जरी करते हैं, फॉगिंग बहुत कॉमनली हम एनकाउंटर करते हैं, फॉगिंग से उसको कैसे उससे प्रिवेंट किया जाए, कैसे उससे निकला जाए? फॉर्मलिन से फॉगिंग सर, फॉगिंग। हाँ देखो, फॉगिंग के लिए एक तो कभी कभी कुछ कंपनी जो ये सप्लेटर देती है ना, उसके भीतर पीछे उनका हीटर रहता है, तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आता है वो बहुत ही कूल होता है। वो प्री हीटेड जो कार्बन डाइऑक्साइड का डिवाइस आपका है, अच्छे मैन्युफैक्चरर्स ने बना रखे हैं, तो उससे आपकी थोड़ी फॉगिंग कम हो जाएगी, नंबर 1। और नंबर 2, फॉगिंग कम करने के लिए जो हमारा ये पोर्ट है, फर्स्ट पोर्ट है एब्डोमिनल, जो पहला पोर्ट हमने लगाया है मिलकर, यूजुअली इसी से हम कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, और यहीं से गैस निकलता है, यही टेलीस्कोप आपका है, तो इसमें फॉग ज्यादा होगा। तो यहाँ से गैस को डिटैच करके दूसरे किसी पोर्ट से गैस को कर दो, ऐसे आप टेलीस्कोप रखो तो ही फॉगिंग कम हो जाता है। तीसरा ये है कि एक थर्मस में थोड़ा सा गुनगुना हॉट वाटर रख के, और उसे बीच में जो आपको टेलीस्कोप को डुबा के उसको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, तब उसके बाद फॉगिंग आपको कम हो जाएगा। ओके
Right, sir. एंड सर अनदर थिंग, अगर जैसे सर्जरी करते वक्त बावल इंजरी हो जाए तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए परफेक्ट डायग्नोसिस के लिए? क्या हो जाए? बावल इंजरी। Bowel injury. बाउल इंजरी तब होता है ना जबकि आप तो ब्लाइंडली ट्रोकर डालते हो, उससे बाउल इंजरी हो सकता है। सेकेंडली आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे आप ये इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हो और यहाँ का जो सीट है, ये सीट आपका डैमेज है, तो ये कहीं बॉल में टच कर गया तो वहाँ बर्न कर दिया, वो जल गया। तो जब बॉल इंजरी आपका होता है तो बॉल इंजरी को रिपेयर करना, क्लोज करना, दैट इज मस्ट, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, एब्डोमेन खोल के होकर करना। अगर लैप्रोस्कोपी से आप इतना ट्रेंड हो या आपका कोई गॉडफादर है वहाँ सिटी में आपका जो जानता है, आप उससे कांटेक्ट में रहो। इसलिए श्रद्धा, कोई भी किसी के पास श्रद्धा करोगी तो वो आपका टीचर बनेगा, आपको सिखाएगा, कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप प्रोफेशनल फील्ड में आपको मदद करेगा। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आपको लैप्रोस्कोपी से भी वो रिपेयर कर सकते हैं, और बहुत से ऐसे लोग कि उसको ओपन करके कर सकते हैं। तो जहाँ इसका डैमेज हो गया, जैसे ये आपका डैमेज हो गया है, तो साथ में इसको नीडल होल्डर भी रखना चाहिए, और नीडल होल्डर से आपका ये नीडल इसमें अटैच किया और इसको अंदर ले जाके और इसको 1 या 2 स्टिच अगर मार देंगे तो उससे आपका ऑपरेशन बंद हो जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि कहाँ हुआ है, कितना हुआ। सपोज केवल एक होल हुआ है तो एक सिंगल स्टिच से भी काम कर जाएगा, और अगर ज्यादा टियर हो गया तब तो आपको रिसेक्शन एनालिसिस में करना पड़ सकता है। तो ये तो जो एक्सपर्ट सर्जन होंगे आपके कॉन्टैक्ट में, उनको आपको मदद देना चाहिए। और अगर एक बार इंजरी हो गया तो एकदम पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्जरी इज एसोसिएटेड विथ कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन इज द पार्ट ऑफ सर्जरी, इसलिए इसको आज मॉडर्न में भी प्रैक्टिस करते समय आपको अनुभव होगा। और हमारे सुश्रुत में क्या कहा है, शल्य शास्त्रम जघन्य शास्त्रम सफलता। एक तरफ शल्य शास्त्र को बहुत बड़ा बताते हैं, सारे काय चिकित्सा से भी ऊपर बताते हैं, एक तरफ कहते हैं कि जघन्य शास्त्र है। क्यों? क्योंकि इसमें सफलता ध्रुव नास्ति। कोई ऐसा सर्जन नहीं हो, एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, जो कलेजे पर हाथ रख कर कहे कि मेरे से कॉम्प्लिकेशन नहीं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन इज द पार्ट ऑफ सर्जरी। जहां सर्जरी डिस्क्राइब्ड है वहां उसका कॉम्प्लिकेशन भी डिस्क्राइब्ड है। तो कॉम्प्लिकेशन इज एसोसिएटेड विद द सर्जरी। और सुश्रुत ने भी कहा है कि इसमें कॉम्प्लिकेशन होगा, जो सर्जरी नहीं करता उसी के साथ कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। लेकिन जिसके साथ कॉम्प्लिकेशन हुआ तो कॉम्प्लिकेशन के रेमेडी के लिए पेशेंस रखना। अगर मान लो बॉयल इंजरी हो गया तो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा में कहीं कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, और 3-4 घंटा का टाइम आपको मिलता है। उसमें या तो मरीज जब कॉम्प्लिकेशन हो जाए तब मरीज के साथ साथ दूसरे हॉस्पिटल में जाना, मरीज को अकेले मत छोड़ना, नहीं तो आपके ऊपर कोर्ट केस कर देगा, लापरवाही किया है। तो मरीज को साथ में ले जाना, उस सर्जन को पैर पकड़ना, सर हमसे कॉम्प्लिकेशन हो गया। कॉम्प्लिकेशन हो जाने निफेरेटिक कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई ऐसी बड़ी गलती नहीं कि माफ न कीजिए, जिसके पास गई हो वो भी बेचारा कभी उससे कॉम्प्लिकेशन हुआ है। तो कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो अपने किसी बड़े सर्जन, बड़े सोर्स पे जाना, उनसे हाथ जोड़ कहना, सर मुझसे गलती हो गई है, कॉम्प्लिकेशन हो गया, प्लीज हेल्प मी। तो जरूर आपका अगर ह्यूमैनिटी है तो आपको हेल्प करेगा। तो कहीं अच्छे जगह जाओ या तो अच्छे लोगों को बुलाओ। जब भी बाउल इंजरी हो जाए बेटा, तो सबसे पहले तो रिकॉग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने रिकॉग्नाइज कर लिया कि बाउल इंजरी है तब तो मरीज सेफ। आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया, सर्जरी खत्म कर ली, सेकेंड डे से प्रॉब्लम हो गया, आपको पता नहीं क्या हो रहा है, अल्ट्रासाउंड करा रहे हो, ब्लड टेस्ट करा रहे हो, परेशान हुए क्या हो रहा है, समझ में नहीं आता है, तब तो पेशेंट गॉन। तो इसलिए अगर बहुत केयरफुली रहना है, हर जगह नजर रखना है, और जब भी टेलीस्कोप अंदर डालो सबसे पहले डायग्नोस्टिक करो। सबसे पहले पोर्ट साइड बाहर निकलते समय भी, और पोर्ट को सब मैंने अंडर विजन पोर्ट को निकालना चाहिए, कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, पूरे बॉल को चेक करना चाहिए शुरू में और बाद में भी, कहीं कुछ इंजरी वगैरह तो नहीं दिख रहा है, कहीं बाइल कलेक्शन है, बॉल कंटेंट तो नहीं दिख रहा है। ये सब सर्जरी के बाद में देखना चाहिए। सर्जरी के पहले भी करो और सर्जरी खत्म हो उसके बाद भी सब कुछ पूरा इंस्पेक्ट करो, बढ़िया से देखो, उसको थोड़ा टाइम लो, 5 मिनट 10 मिनट टाइम लो, जल्दीबाजी की सर्जरी नहीं होती। ओके सर, बॉयल इंजरी तो बहुत मींस 1-2 दिन में उसके कॉम्प्लिकेशंस तो अपने को पता चल जाएंगे, लेकिन जब अपन यूरेटर करते हैं, थर्मल इंजरी जब होती है यूरेटर को, देन इट इज अ लेट कॉम्प्लिकेशन दैट वी कम टू नो।
सो ऐसे समय पे अपने को मतलब उसके लिए अपने को क्या इन्वेस्टिगेशंस प्रायरली और क्या सिम्टम्स को प्रायरली ध्यान देना चाहिए उनके? यूरेटर इंजरी होने के बाद? यस, थर्मल। नहीं, एक बार फिर से समझिए क्वेश्चन, आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या है? जैसे अगर बाउल इंजरी होती है ऑब्वियसली 2-3 दिनों में उसके कॉम्प्लिकेशंस अपने को पता चल जाएंगे, लेकिन जब यूरेट्रिक थर्मल इंजरी होती है तो ये जल्दी समझ में नहीं आती है। आफ्टर 3 weeks और somehow later on we will come to know कि means she is having thermal injury to the ureter also. So क्योंकि उसको shrink होने में and then उसको obliterate होने में टाइम लगता है, and later on we will come to know कि इसको यूरेट्रिक इंजरी हुई है। तो ऐसे पेशेंट्स को अपने को किस तरह से मतलब आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इनमें यूरेट्रिक इंजरी हुई है? अच्छा ना, यूरेटर इंजरी आप तो जैसे कह रहे हो जो लेट में पता चलता है, तो 4 दिन के बाद चलता है, वो थर्मल इंजरी से होता है। थर्मल इंजरी हुआ, थर्मल इंजरी होने से जो वहाँ स्लब बना फिर वो ब्लो कर गया, अब ब्लो कर गया तो फिर वहां से यूरिन आने लगा, लीक होने लगा, आपको परेशान है। तो ऐसे केसेस में आपको बेटर है कि आप यूरोलॉजिस्ट का हेल्प लें। सर्जन खुद जिसके हाथ से कॉम्प्लिकेशन हुआ है वो अपने से चाहे कि हम कुछ कर लें तो वो संभव नहीं है, उसको करना भी, कोशिश भी नहीं करना चाहिए। किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट के जाके उससे होना चाहिए, सर हमने 3-4 हफ्ते इसको ऐसे किया था और अभी इसको प्रॉब्लम है, तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो या तो मान लो कि आईवीपी करके देख लेते हैं, या अल्ट्रासाउंड करके कुछ समझ में आता है उससे देख लेते हैं, या फिर उसमें लैप्रोस्कोपी करके, सिस्टोस्कोपी करके देखेंगे, यूरोट्रोस्कोपी करके देखेंगे, और चाहेंगे तो अगर मान लो साइड वाल केवल उसका गया है तो एक अगर स्टेंट डाल करके छोड़ भी देते हैं, डीजे स्टेंट डाल के छोड़ दिया तो भी वो उसका ठीक हो जाता है। तो यूरोलॉजिस्ट के पास ही प्रेरणा भेजना चाहिए उसको, बल्कि जाना चाहिए और से कांटेक्ट बनाना चाहिए। गायनिक लोगों को जब, चूंकि यूरेटर ऑलवेज बी फियरफुल फॉर एवरीबॉडी, तो आपको कम से कम सबसे पहले जो आपका राउंड लिगामेंट है, राउंड लिगामेंट से विंडो बना करके और वहां पर उसको यूरेटर को हमेशा ट्रेस कर लेना चाहिए बिफोर एनी सर्जरी ऑफ हिस्टेक्टमी, कोशिश करना चाहिए। यूट्रोसैक्रल, जब हम यूट्रोसैक्रल के नीचे जब always we have to look for this कि हम शायद यूरेटर के ज्यादा नजदीक तो नहीं है, और that purpose during the hysterectomy also what we do कि we means जो अपने ब्रॉड लिगामेंट के जो लिप रहते हैं उनको सेपरेट करके ही हम लोग नीचे लास्ट तक जाते हैं। सो लिटिल बिट जब हम यूट्रोसैक्रल तक पहुंचते हैं तो थोड़ा लैटरलाइजेशन ऑफ यूरेटर हो ही जाता है, तो वो प्रिकॉशन हम जरूर लेते हैं। बट कभी कभी ये थर्मल इंजरी ध्यान में नहीं आती है, मतलब हाँ, क्योंकि समझ में नहीं आती कि थर्मल इंजरी हुई है या नहीं हुई, वी जस्ट कैन डाउट, पता ही नहीं चले, वो तो बात ही नहीं। उसके लिए यूरोलॉजिस्ट की हेल्प ना चाहिए, क्योंकि उसके पास काफी टूल्स है, उसका आर्मामेंटेरियम में हर तरह का यूरेटर हो, चाहे ब्लैडर डैमेज हो, उसके पास सारा चीज है, तो वहीं रेफर करना चाहिए, उसको कांटेक्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप पहले नहीं कांटेक्ट करोगे तो पता नहीं कुछ ऐसा वैसा बोल देगा कि पहले वाला किया हुआ सर्जन फंस जाएगा। तो इसलिए जाके उसको बताना चाहिए, सर आई हैव डिड इट, हमसे ऐसा हो सकता है, ऐसा हो गया, प्लीज हेल्प। तो उसमें सर्जन थोड़ा लीनियंट हो जाता है। जहां आप झुक जाओगे वहां ऊपर से आशीर्वाद देगा, आंकड़े रहोगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो न्यूरोलॉजिस्ट से कांटेक्ट रखना चाहिए। और आजकल तो इल्यूमिनेटिंग कैथेटर्स आ गए हैं, यू जस्ट वो इल्यूमिनेट करता है तो आपको यूरेटर दिखता है। तो खैर वो तो अलग बात है, लेकिन इंजरी हो गया तो क्या करेंगे, तो जस्ट कांटेक्ट। ओके, यस, ओके अदिति। ओके सर, एक और क्वेश्चन है कि केवल लंबी सर्जरी चलती है सर, तो इज देयर एनी प्रिकॉशन टू प्रिवेंट द फटीग टू द सर्जन एंड असिस्टेंट? फटीग टू द सर्जन एंड असिस्टेंट इन लंबी सर्जरी? देखो लंबी सर्जरी में जो सर्जन है, सर्जन का तो ध्यान सर्जरी में लगा है, तो उसको फटीग नहीं होता है। फटीग किसको होता है? जो कि बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो सर्जरी में। असिस्टेंट है उसको भी फटीग नहीं होगा, लेकिन जो सर्कुलेटिंग स्टाफ है हमारा, वो जाके या तो कहीं छुप के बैठ जाएगा, वो बोर हो जाएगा देखते देखते, तो वही सब भागते हैं ऑपरेशन थिएटर से। हम लोग को चिल्लाना, भाई सब कहाँ गए, चलो ऑपरेशन थिएटर में आ जाओ,
तो करेगा क्या? आप सर्जरी में इन्वॉल्व हो, असिस्टेंट आपके सर्जरी में इन्वॉल्व है और उसको फटीग नहीं हो क्योंकि वो जाके आराम करके चला आता है, 1 बाय 1 जाते हैं, आराम करके चले जाते हैं। तो ऐसा कोई फटीग में कितना घंटा सर्जरी करोगे? और फटीग होता भी है तो लोग, बहुत से लोग जैसे 6 घंटा 8 घंटा की सर्जरी करते हैं, तो उसमें वो लोग कुछ करते होंगे, कॉफी भी पीते होंगे, टाइम पास करते होंगे, लेकिन ऐसा हमारा एक्सपीरियंस नहीं कि इतना टाइम हो जाए कि सारा स्टाफ फटीग हो जाए। दैट आई डोंट रिमेंबर, ऐसा तो आपने नहीं देखा। आपको एक्सपीरियंस है प्रियंका, आपके फटीग होता है? नहीं नहीं नहीं, हैबिट हो जाता है करने का तो फटीग नहीं होता है। अगर काम करते करते आओ सर्जन काम करते करते वो कहाँ उसको फटीग होगा, यूजुअली होता नहीं है, ये हमारा एक्सपीरियंस में नहीं आया। Okay, sir. Any other queries from anyone? Okay. If it is not there, you can conclude, Aditi. Okay, sir. Thank you, sir. I hope everybody's doubt have been clear now. Now I request Dr. Alba to please propose vote of thanks. Dr. Alba. Please unmute yourself first. Yeah, I was unmute, so sorry. Yes. I feel immense pleasure to propose a vote of thanks on behalf of NIPA OBGY Society. I want to express my sincere gratitude to Dr. Raman Singh sir, who spared his precious time to enlighten us all from his busy schedule. Sir talked about the basics of laparoscopy so clearly. This will surely help all of us in upgrading our skills. Thank you so much, sir. I would also further extend heartily thanks to Dr. 𝙇𝘼𝙋𝘼𝙍𝙊𝙎𝙾 Temburnikar sir, Dr. 𝑈𝑠 sir, and Dr. 𝑎shutosh Kulkarni sir. I also thank Dr. Kamini ma'am, Dr. Priyanka ma'am, and Dr. Vishnu Bhavane sir for their continuous guidance. My deep thanks and appreciation also goes to all those who are live here with us and are attending the webinar with such a great enthusiasm and made this event a great success. Thank you, everyone. So with these words. Thank you to Dr. Priyanka, Dr. Aditi, Dr. Alpa. So much, sir. It's our privilege that you are here and guiding us. Thank you so much. We want to see you in our other webinars also. And especially we will invite you for this. And as you said, we will definitely go for a NIMA Endoscopy Society also, where you both general surgeons and gynecologists. सबके खाना खाम पंकज बानो Continue, Dr. Aditi. Raghavendra asking, Dr. Raghavendra asking some question. I guess. Yes, Dr. Raghavendra. Dr. Raghavendra? Hello? No, I think. Yes, ma'am. Hello? You can ask your query, doctor. Yes. Hello. Hello, Dr. Raghavendra. Am I audible? Yes, Yes, doctor. you are audible. Sir. Hello. Yes. Sir, my question is. Yeah. It is oftenly said ergonomics in laparoscopy. Yeah. How can be made port sites easier while doing laparoscopic surgery? Number one question. Point we use to introduce the port, where it is essential, sir, and how far it is it should be used, and what are the indications, sir? Okay, I think you have two questions. One is ergonometry, or second is how to use this port. Yes. So first, for answer to the first question, ergonometry means your relation with the patient, your physical relation with the instruments, the patient, the table, and your monitor, so that you should not get any fatigue, especially your shoulder, your elbow, your arm.
So it is advisable that your height of the operation theater table is so that comfortably you can use your hand by abducting your elbow 15 degree and your elbow up to 60 degree, 90 degree, 60 to 90 degree. If you hold your instrument like this, then you will never get any effect. If you hold instrument like this, your table is very high and you are doing like this, definitely you will get pain in the shoulder, spondylosis and other things. So your operation table and the height of the patient at the level where you can be comfortable of your hands, especially the abduction of 15 degree and this elbow is about 90 degree. And in this situation, if you are doing the surgery, it is easy and you don't get any fatigue. And regarding the port, nowadays, previously it was mandatory that there was advisable that camera ports should be at the level of umbilical, supraumbilical, then infraumbilical, and again those epigastric region, epigastric port, then two lateral ports. Nowadays, what we, by experience, it is now consensus that your whatever port you use, your working full should be at the 60 degree, like this, 60 degree. Both instruments should come together at the making at angle to the tissue, working tissue, it should be at the angle of 60 degree. And suppose your port is like this, your instrument will be like this. Suppose your port is so near, your instrument will scramble to each other and you do not work properly. So to hold the tissue, to dissect the tissue or do laparoscopic ligation, suturing material, it is seen that if you make your angle 60 degree, then the things become easier. So it is not essential that you use only 3 port or 4 port or 10 mm or 5 mm. The 5 mm port is what type of port where if you leave it without suturing, there will be no harm. There will be no hernia and it will heal properly. So you should have in operation theater 5 mm brokers in extra. And whenever I feel that my working angle is not proper so that I can dissect the organ or I can do the suturing, you can introduce the another or extra 5 mm broker so that your angle should be maintained up to 60 degree and you work properly. So the port site is all depends upon your ease of working. Wherever it gives your easy functioning, that is the usual site, because the physics of the patient is also vary from each other. You may not be required to put your camera port at the umbilical region. You may go down or may go up also, because sometimes we have seen this liver is come up to the pelvis, or liver is come up to the umbilicus. So if you have a camera at the umbilical point, you won't see anything inside the abdomen. So you go down in between the symphysis and the umbilical, and you introduce your camera over there. So all these ports should be in such a way that your vision is clear and elimination is clear and your instruments are in proper way so that you use your both hand for dissection and the suture. Okay. Hello. I think we have, sir have answered everything. Is there any questions remaining again? Okay, then Alpa, you can continue. So with this, I would conclude the session. Thank you all so much. You all can sign out now. Thank you so much, sir. Looking forward for your another session. Thank you so much, sir. Thank you so much.